लक्ष्मीनारायण भगवानको कसैको मुखै उकिया छैन किनभने जय जाडो भएर होला है। उमा महेश्वर भगवानको सिया जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे सर्वतारः सावधाना भवे वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबैले आँखा बन्द ओठ बन्द आफ्नो हृदय आकाशमा सच्चिदानन्द घन परमात्मा परमेश्वर श्री कृष्णको दिव्य छटाले युक्त भएको त्यो मूर्तिलाई आफ्नो हृदय आकाशमा राखेर एकैछिन यही मन्त्र सबैले जप्नु होला। 10 चोटि। सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्माको गुणानुवाद हामी श्रवण गर्न हाम्रो प्रारब्ध बलले साथ दिएको छ। अलिकति यता सर्नुहुन्छ उहाँ बाबुलाई बस्नु थोरै जय हामा प्रथम अध्यायमा नैमिषारण्य क्षेत्रमा रहने भएका 88,000 ऋषिहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै सौनकजीले प्रश्न गर्नुभएको छ। ऋषिहरूको भनिने भाषा र संस्कृत भाषामा त्यति धेरै अन्तर छैन, हामीले बुझिनेछ। कृपया बीचमा बोलिदिनु भएन। हजुर बस्नुहोस् त एकछिन, अहिले थपमलाई यो पहिलो अध्याय हो, कतै ध्यानमा ल्याओस्। बाहिर बस्दा नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। सबै एक ठाउँमा बस्न बस्ने सजिलो ठाउँ बनाऊ र त्यतितिर ध्यान दिएर हजुरहरूले सुन्नुभयो भने, यो ध्यान यता गएन भने नि ध्यान बाहिरतिर गयो भने हामीले त्यही भएर समिति गठन गर्ने भनेको छ। कोहीलाई पनि यहाँ अन्यथा नहोस्, समिति गठन। तपाईँले यहाँ बस्नु भएको छ, पैसा चाहियो नि ठ्याक्क आउने, यो चाहियो नि आउने, ऊ चाहियो नि आउने भयो भने ध्यान दिएर जाँदैन। मैले हिजो पनि हजुरहरूलाई भनेको छु, विभिन्न कामको लागि हामीले समिति गठन गर्ने र त्यो समिति आफ्नो जिम्मेवारी सबैले पुरा गर्ने। हजुरहरू जो हुनुहुन्छ हजुरहरू एकदम ध्यान दिएर धुन्धुबारीको कथा सुन्नु भएको छ नि, सुन्नुभएको कि छैन? धेरै ठाउँमा यहाँ त यो यज्ञ सप्ताहले युक्त भएको ठाउँ हो। धुन्धुबारीको कथा सुन्नुभएको छ। गोकर्णजीले यज्ञ गर्नुभयो धुन्धुबारीको साथ। धुन्धुबारी कहाँ बस्नु भएको थियो? बस्ने ठाउँै थिएन। उहाँ निराकार रूपमा अथवा प्रेतको रूपमा दाईको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। सुन्न आउनुभयो, ठाउँ सबैलाई देखिने गतिलाई ठाउँ बनाइएको धुन्धुबारीकै ठाउँै थिए। उद्धार उसैको गर्नु छ, तर उसैलाई बस्ने ठाउँै राखिएको थियो। खोज्यो बिचरा चारैतिर घुमेर कहीँ देखेन। एउटा यो मन्दिर बनाउने क्रममा एउटा लिया गाडिएको रहेछ। लिया गाड्ने क्रममा एउटा माथि कुनै फुलको पनि नभएको आँखाले युक्त भएको एउटा बाँस त्यहाँ फेला पार्यो। तलबाट पुवाल रहेछ। त्यही पुवालबाट भित्र छिरेर वायु रूपको चाहिँ ऊ त्यहाँ भित्र छिरेर बसेर कथा सुन्न थाल्यो। अरूलाई पङ्क्तिबद्ध भएर आफ्ना ऋषिहरूलाई, समस्त ऋषि मण्डलीहरू त्यहाँ थिए, देवी देवताहरू त्यहाँ थिए। मूर्त रूप भएर सबै आएर बसेर मूर्त अमूर्त रूपमा बसेर भागवत सुनिरहेका थिए। तर पछि गएर फल पाउने बेला कसले पायो? धुन्धुकारीले फल पायो। हजुर हामीले यहाँ खर्च गरेका छौँ, ऊ पर बसेर राम्रोसँग कथा सुनेको रहेछ भने उसले फल पाउँछ। हाम्रो यो खर्च मात्रै हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हजुरहरूले यतितिर ध्यान दिनको लागि अनुरोध गर्दै अब म प्रथम अध्याय सुरु गर्न गएको छु। सबै सावधानतया शरणौ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथम स्कंद प्रारभ्यते। अथ प्रथम पारायणः। जन्माद्यस्य यतो नयादितरतश्चार्थेष विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ते सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसमनासतः। तये कलातु मुनयः प्रातर्भूतहुताग्नयः
सत्कृतं सुतमासीनं पाप्रच्छोदमादरात् ऋषयोचो तुया खलु पुराणानि शेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्युतम् यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायण अन्ये च मुनयः श्रुता परापरविदो विदो व्यक्ततं संवितत् सर्वं तत्तु तदनुग्रहात् भूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युतः तत्र तत्राञ्जसायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसाम् एकान्ततः श्रेयास्तन्न संसितुमर्हसि प्रायणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्यायुपद्रुताः भूरिणि भूरि कर्माणि सुरतव्यानि विभागशः अतः साधुत्रयतसारं समुद्रेतमनीषयः व्रीहीन श्रद्धानानां यनात्मा सम्प्रसीदते सुतजानासि भद्रं ते भगवान् स तुतां पतेः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अरसङ्गानुवर्णितम् यस्यावतारो भूतानां क्षमाय च भवाय च आपन्न संस्थितिं घोरां यन्नाम दिवसो गृणन् ततः सद्विमुच्येत यद्विवेति स्वयं भयं यत्पादसंश्रयः श्रुत मुनयः प्रसमायनः सद्य पुनस्तुपस्पृष्टः शोभुन्यापुनुसेवया को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेभ्यो कर्मणः सिद्धिकामन शृणुयार्यसः कलिमलापम् तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि शूरिभिः व्रीहीन श्रद्धानानां लीलया दरतः कलः अथाख्याय हरेर्धीमन् अवतार कथा सुरः लीलाभिदरतः स्वैरम् ईश्वरस्यात्ममाया वयं तु न वितृप्याम उत्तमश्लोकविक्रमे यच्छ्रातां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे किरीटवान् किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गुडः कपटमानुषः कालिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षिणा हरेः त्वं न सन्दर्शितो दात्रा दुस्तरं निस्थितिर्सतां कालिं सत्वरं पुंसां कर्णधारैवार्णवम् व्रीहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मबर्मणे स्वां काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः व्रीहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मबर्मणे स्वां काष्ठा मधुनोपे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेते गोविंद दामोदर माधवेते बोल सच्चिदानंद भगवान को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय व्यासोवाच इति सम्पन्न समृतो विप्राणं ब्रह्मवर्षणि प्रतिपद्य पचते सम्प्रवक्तुमुपचक्रमे श्रुतौ वाचायं प्रवर्धन्तमनुपेतमपेतकृतं त्रैभायनो विराकातराजुवाव पुत्रेति तन्मयतया तरभूमिने दुस्तं सर्वभूतैर्दयं मुनिमानतस्मै यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकं मध्यात्मदीपमतितिर्शतं तमन्तं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यासनमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुनयः सद्गुरुत्वं भवद्गुरुलोकमङ्गलं यत्कृतं सम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति सबै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरालोक्ष्यते अहेतुक्य प्रतिहता आत्मा सम्पश्यति वासुदेवी भगवती भक्तियोगप्रयोजितः जनयत्यर्वान् इति शब्दते पार्श्वधराणां मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यत्यात्मनिचात्मानं भवतः श्रुतगृहीतया तपोमित्रविषयकर्पणस्य स्वनुष्ठितसधर्मस्य संसिद्धिरारितोषणं तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां तपि स्वतःव्यक्तिर्देहः पूज्यस्य नित्यदा यदनुध्यासिना युक्त कर्मग्रन्थनिबन्धनं चिह्नन्ति कोऽपि तस्य कोऽनुपुदं कथारतिं शुश्रूषोषप्रदानस्य वासुदेव कथाविशेषेण महर्षिमया विप्र पुण्यतीर्थनिसेवनात् शरणतां शोभतां गण पुण्यसर्वाणकीर्तन हृद्यन्तास्तो भद्राणि विदुनति श्रेषतां नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया विभूतया विलसितश्रेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आवादि विज्ञानेन विजृम्भितः यथा यवयतो ये बणिर्दारुष्येकसो एव निशून्यानि भवाति विश्वात्मभूतेषु तथा पुमानसो गुणमयैर्भावे भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभे स्वनिर्मितस्य निवेश भङ्क्ते भूतस्य तद्गुणं भावे तेन लोकान् वै लोकभावनलीलावतारनुरतो देवत्रेण राधेशो हरि ओम तस्य जय जय श्री भागवते मा प्राणिपारं संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने द्वितीयपारायण हरये नमः। गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण। ओम
नमो भगवते वासुदेवाय सुतौ वाच जगृह पौरुषं रूपं भगवान् महदादिवि सम्भूतं सकल षोडशकलमादौ लोकस्य शिक्षाया यस्यां वशिष्ठया न च योगनिद्रां वितन्वतां नाभ्यर्धं भुजा दासीत् ब्रह्मापि सुषिजां प्रति यस्य भैव संस्थाने कल्पितो लोकविस्तारः तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सत्त्वमूर्जितं पश्यन्तदो रूपमतव्रत सुषा सहस्रपादरूपिजाननातुदं सहस्रमूर्धश्रवणचिनासिकं सहस्रमौल्यं भरकुण्डलोल्लसदेतं नानवताराणां निधानबीजमाभ्यां यस्यां सांसिने सीर्यन्ते देवत्रे नरादयः सायप्रथमं देवः कौमारं सङ्गमास्थितचरदुच्चरं ब्रह्मचर्यं पण्डितं तृतीयं दुर्वायासरसातलगतां महिम उद्धरिशिनुपादत यज्ञस्य सौकारं बभुः तृतीयं ऋषर्गं च देवसी त्वमुपेत्य च तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्मं कर्मणां यथा तुर्यधर्मकलासर्गे नरनारायणाभिषेकभूतात्मकोशमुपेतम् अकरो दुश्चरं तपः पंचम कपिलो नाम स्वीदेशकाल विप्लुतं प्रवाचसुरैः सांख्यं तत्त्वग्राम विनिर्णयं शास्त्रातिर्वपत्यत्वं भृता प्राप्त न सूया आनंसिकी मलर्काय प्रहलाद देव उच्चमान ततः सत्वं आकुष्ठं रुच्यते विविधाय तस्या मातेहि सुरगणैरापत् स्वयंभवान्तरम् रपात् स्वयंभवान्तरम् अष्टमी मेरु देव्यां तु नाभिर्जा दौरु कर्म दर्शन पद्मधीराणां सर्वासं नमस्कृतं ऋषिभिः याचितो वेदे नवमं पार्थिवं बभो दुग्धे माम् औषधे विप्रस्तेन सौषत्तमं रूपं सजगृहे मासं चतुषु दधि सम्प्लवे नाट्यरूपं मयि मयम् अपद्मयुषतं मनम् सुरासुरानमोदनं मततं मदराचलं जत्रेकमठरूपेण पीठे एकादशे विभूतानन्तरं द्वादशं त्रयोदशं मनैव च अपायेश्वरानन्यं मोहिन्यमोयानुतया चतुर्दशं नारसिंहं द्वितीयदैत्यनपूजितं तदारकरदैर्वच शेतकां कटकृत्यथा पञ्चदशं वामनगुणं कृतकादधरं बले पदत्रयं याचमान प्राप्त्यादेषु श्रीविष्टभम् अवतारे षोडशमी पश्यन् ब्रह्मद्रुवं निर्वान् त्रिशतकृतगोभिते निचत्रं मकरणमयं ततः शब्ददशे जातः सप्तपराशर चक्र वेदतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसल्पमेधसं नरदेवतमापन्न सुरकार्ये चिकीर्षे समुद्रनिग्रहादिनि चक्रविज्ञानतपरं एकोनविंशतिविंशतिमर्पिणीषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाभिदेवो भगवान् हरवरं ततः कलु सम्प्रवृत्ते समवाय सुकृतविषं भूतु नाम्न जनसुतकी घटशिवाभिषिते हताशु युगसन्धायं दशुत्तायसु राजसु जनिता विनु यशस्व नाम्ना कल्पजगत्पति अवतार संख्या हरि शतनिर्दिग यथा विदासिनकुल्य सरस शिवसहस्रशः ऋषो मनभो देव मनोपुत्र महोदश कलः सर्वे हरिरेव सप्रजपतय तथा यति तंस कला पुंस गणतो भगवान् स्वयं इन्द्रविजयकुलं लोकं मृणयन् युगे युगे जन्म गुह्यं भगवतो एतत् प्रयतो नर सायं तात्र गणन् बाधत् दुःखग्रामात् विमुच्यते एतद्रूपं भगवतो यरूपसच्चिदात्मनं मायागुणैर्विरचितं मोदादिभिरात्मनि यथा नवसिंहे गौगो रेणुर्व पार्थिवेनिलयं द्रष्टदितिरुषत्वम् आरोपितमवदिवे अत परं यदभ्यतं व्यूढगुणविहितम् अदृष्टश्रुतवस्तुतः सजीवो यत्पुनर्भवो यतमे सलसद्रूपे प्रतिष्ठितेषु संविदा अविद्ययात्मनि कृते इति तद्ब्रह्मदर्शनं यद्य सुपरता देवी मायापै शारदीमति सम्पन्न एव देवी दुर्महिनी स्वमहि यतेवं जन्मानि कर्माणि एकत्वजनस्य च प्रणयन्ति स्म कपयो वेदगुह्यानि हृत्पते सवायिनं विश्वमो गलिले श्रीयते भक्तेन न सज्जते अस्मिन् भूतेषु नान्तरेतात्मतन्त्र षड्वर्गिकं गतिषड्गुणेषां न च सकाशि निपुणेन धातुरवैति जन्तुको मनीषवति नामानि रूपाणि मनोवचो विसन्तन्नतो नटचर्यामि वाक्यः सभी ददातु पदवीं परशदुरन्तप्रियस तथाङ्गपाणेः युमा ये असन्ततया निवृत्तभजते तत्पादसरोजकर्णम् अथे अधन्या भगवन्त एतं यद्वा सुदेवी किल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न एकत्रभूय परिवर्त उग्रः इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितमतम श्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषिनिश्चयसाय लोकस्य धनं षष्ठयनं महत्तदिदं ग्राह्यामास श्रुतमात्मवताम्बरम् सर्वभेदिहासनं सारं सानुसमुद्रितं चतुसं श्रावयामास महाराजं परिचितं प्रायो भविष्यं गङ्गायां परितं परमर्षिभिः कृष्णेश्वरामुपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नटदृशामेष पुराणात् धुनोदित तत्र कृतयतो विप्रस्य गुरुतेजसा अहं चाधिगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोऽहं वस्त्रावेष्यामि यथातीतं यथामते हरि ओं तस्य जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारसंहितां प्रथमस्कन्धे विषयोपाख्याने तृतीय हरे नमः गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेते ओम नमो भगवते वासुदेवाय व्यासोवाचेति ब्रह्माणं संस्प्रियमुनिनां दीर्घशरीरां वृद्धः कुलपति सुतं भावृषौनको ब्रवीत् शौनको वाच सुतसुतमहाभागवदनुपदताम्बर कथं भागवतीं पुण्यमेधा भगवान् शुकः कस्मिन् युगे प्रवृत्तिं तानि वाक्यानि हेतुना कुतः संशोधितः गृह्णात् कृतवान् समेतां मुनि तस्य पुत्रो महायोगी समदृङ्निर्विकल्पक एकान्तमतिरो नेत्रो गुरु मूढैवेयते दृष्टानुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनाग्नं देवीह्रिय परिदतं न सुतस्य चित्रं तद्विच्य पृच्छति मुनु जगदुस्तवास्ते त्रिपं विधानतो सुतस्य विविक्तदृष्टे कथन लक्षित पौरहि सम्प्राप्त गुरुजाङ्गलान् उन्मत्तमुख जडवद विचरन् गजसावये कदम्ब पाण्डवेयस्य राजस्य मुनिना सह संवादसमभूतात यदृशा तदेशोदे सकोदवनमातमि क्रियसुक्रियमैदनम् अभ्यच्छति महाभगत् इति कुर्वतदाश्रमम् अभिमनुसुतं चोतः प्राहु भागवतो तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि जग्रणेहिना सम्राट कश्यपायतो अनुनमानवर्तन प्राय भविष्य गंगायं मनादित विराश्रियं नमन्ते यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानिय धनानि शत्रवः कथं च वीर्य श्रियमङ्गतोस्तेजां युवै शतोष्टमहो सहासुभि शिवाय लोकस्य भवाय भूतये उत्तम श्लोक परायणा जन जीवन्ति नात्मार्थमसो पराश्रयं मोच निर्वित कुतः कलेवरं
तत्सर्वं न समाच्य पीठे यदि अकिञ्चन मन्यतं विषये वाचस्नातमन्यत्र छान्दसा श्रुतवाच द्वापरे समानुप्राप्ते तृतीय गुण युग पर्याये जात परसरायोगी वात्सव्यां कलया हरे स्वगताचि सरस्वती उपस्पृश्य जलं शुचि विविक्त देश आसीन उदिते रविमण्डले परापर केसरिषि कालेन वेदनमर्ष युगधर्म व्यतिकरं कर्णं भवि युगे भौतिकानां च भावानां शक्तिरासं ततर्गतम् असद्धलानां निशत्तं दुर्मेधान् अचेतायुष दुर्भगा सजनान् बीजं नृति तेन चक्षुषा सर्वभूतानां सर्वाणां दत्तु हितममो गादे साधुरथ कर्मसुतं प्रधानं विच्छेवैदिकं देकं वेददात् एके शान्तात्ते वेदमेकं चतुर्वेदं ऋग्वेदं सामथर्वाख्यं वेदस्य कार उद्धृते इतिहास पुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते तात्र वेददार पहिले सामगोजामिनी कवि पशुपाने ये वैको निष्णातो यजुषामुत अथर्वं गिरसामा शिशुमतु दारुणं मुनि इतिहास पुराणानां पीतामि रोमहर्षणातायत ऋषे वेदं संसंपेशनं कथा शिशिपशेत शिशे वेदाते शाकिनवान् तयेव वेदा दुर्मेध दयन्ते पुरुष यथा एवं प्रकार भगवन् व्यासकर गुणवत्सल त्रिसूत्र दिव्य बन्धनां त्रयेन सुखी गोचर कर्मस्य अशिमुनां श्री एवं भविदीय इति अर्थवाक्यान् कृपया मुनिना कृताम् एवं ब्रह्मतस्य सदा भूतानां श्रेयसिति सर्वात्मकेनापि यदाह नातुषते हृदयं तथा नाति प्रसिद्धते हृदय सरस्वत तत् शुद्ध भीतर कन् विभित तैरं प्रवाद धर्मः दृष्टवर्तने मय संनांसि गुरभवनयः मानित निर्विलेखन ग्रहीतं चानुशासनं भारत विपदेशन यम्न यातस दर्शित दृश्यते तदमात्र शुद्ध दिविरप्यता तथा विपदमे दयो यात्मा चैवात्मना विव असंपन्न इव वादि ब्रह्मपदस्य साप्तम किंवा भागवतादर्वण प्राण निरूपित प्रिया परमहंसानं तयेव यच्युत प्रियाः पश्यवन् कलमात्मानं मन्येऽहं मानसके दत्तगणश नारदो व्यागदासं प्रागुदायकं तमभिज्ञासास प्रतुते यागतं मणि पूजय मास विधिवनारदं सूर्यपूजितं हरि ओं तस्य जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितां प्रथमस्कन्धे नविशेषोपाख्याने चतुर्थपादे नमः। कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव ओं नमो भगवते वासुदेवाय सुतोवाच ओम नमो भगवते वासुदेवाय तदनं सुखमासीन उपासीन प्रिय सर्वदेवसी प्राविप्रक्षं पीडापाणि स्मयन् निवन नारदोवाच पारश्रे महाभाग भवभदकचिदात्मनो परितुषितारिण आत्ममानसे भवाय जिज्ञासितं सम्पन्नमभिधे मदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्तं सर्वार्थपरिनिहितं जिज्ञासितमधितं च एतद् धर्मसनातनं मातापि श्रुतस्यात्मानमकृता दैव प्रभु यशोवाच अस्ति भवि सर्वमिदं तो यतं तथा विनात्मप्रतिषेधे मे तन्मूलमद्वैतमगाधबोधं पृच्छामि त्वात्मभात्मबोधं सबै भवान् वेद समस्त गुह्यम् उपासित पुरुष प्राण परापरिषं मनस भविष्यं शरीरवर्तते पुनैरसङ्गं त्वं प्रयतण्डर्कैव त्रिलोक्यमन्तस्तरबायु आत्मसाक्षे पराबरे ब्रह्मणे धर्मतो प्रतिष्ठातस्मै न्यूनमलं विचक्षण श्री नागोवाच भवतानुदित प्रेम यशो भगवतो मलं येने वासुनतुषे तन्मन्ये तद्दर्शनं गिलं यथा धर्मदयशास्त्रं मुनिपरि अनुकृता न तथा वासुदेवस्य महिमयनु वर्णिता नये वसस्य द्रवणं हरे यशु जगत् पवित्रं पर्गणे दकारे जय तद्वा एषं तरितमुषं दिमानस नयत् राम स निरमन् तुषिक्षय तद्वा विसर्वजनता गविप्लव यशं प्रतिश्लोकमपद्यवत्तविनामनिनन्तशेषं गीतानि शृणन् गीतानि गृह्णन्ति साधव नस्कर ब्रह्मप्रचितभावपदितं नशोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुत पुनः ब्रह्मेश्वरी न कर्पितं कर्म यदपि कारणमतो महाभागभव नमो वदे शुचि सर्वासतरतो धृतव्रत उरु कर्मशकिलबन्ध महोदय समाधिनानुस्मरतद् विशेषणं ततोऽन्यथा किञ्चनेपि भक्षतपितृतत्कृतरूपणामपि न कुत्रचित्वापि चतुष्टितामध्ये लभेत वाता तन्नौ दिवास्पदं जिगुषितं धर्मकृतेऽनुशासत स्वभावरक्तसमां व्यतिकर्म यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्येत न मन्यते तस्य निवारणं जन विचक्षणोसारतिवेदितं विभोरानन्दपारस्य निवृत्तितः सुखं प्रवर्तमानस्य गुणैर्नात्मनो ततो भवान् दर्शयति सिद्धं विभूतेत्वा स्वधर्मं चरणं भुजं हरिभजन् हरेर्भजन् पक्वतपते ततो यदि यत्र गभाद्रमबोध मुष्य किम् हरि हरि को वातात्मातो वदनां च धर्मत तस्य वेदो प्रयते को विदो न लभ्यते यद्ब्रह्मताम् उपरि यत् तल्लभ्यते सुखदवन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गविजनमसन् अभयजनो जातु कथञ्चन प्रति मुकुन्द सेवेन्यवदाङ्गसंसृतं स्मरन् मुकुन्दाङ्ग्रियुपगुहनं पुनरभिहातुमिच्छिन्नरसग्रहो यत इदमिति भगवान् निवेतर यतो जगतान् निरुद्धसम्भव यद्यं ताति स्वयं वेदभव तथा विवे प्रातिसमाधानं भवतः प्रदर्शितं त्वमात्मनात्मानमभि अमुगतिः परस्य पुंसः परमात्मनः कलम् अजं प्रजातं जगतः शिवाय तन्महानुभावः दिगण्यतमिदं पुंसतपस श्रुत शिवसिद्धसुक्तसिद्धभूतिदत्तयं हरिचिदोद्धक अभिर्निरूपितो यतु तमश्लोकगुणानुगणनो अहं पुरादिदभावि भवं मुनिदास सुखाशासनभिदभादिनां निरूपितो बालकैव योगिनां शुश्रूषणे प्राविशनिर्विवीक्षतां ते मय्यपेत गिरचापलेर्भगेतान्ते नुवर्तिनि चक्रुकृपाण्यद्देवितुल्य दर्शन शुश्रूषमाणे मुनैर्भवासिनि उच्चिष्टलेपान् अनुमोदितो दिव्य संस्कृष्म भुञ्जे तदपाष्टकिलविषा एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसस्तद्धर्मेवात्मरुचि प्रजायते तत्रान्नं कृष्णकथा प्रगायतं अनुग्रहेण शृणवं मनोहरताश्रद्धयम्यनुपदं विशृणत प्रिय सर्वस्यङ्गं मम भवद्रुचे हरि हरि तस्मै तदालं तरुचर महामुनि प्रिय सर्वस्य स्खलितं मतिर्मम यः मे तत्सदसस्वमाय पश्य मयि ब्रह्मणि कल्पितं परेतं शरत्प्राविशिका भृतु हरे विशुन्नतो मे सबमे सुमलं संकीर्तिमानं मुनिभिर्महात्मभिर्
भक्ति प्रवृत्तात् मदस्तमोपात् तस्य विरक्तस्य पश्चितस्य आतेन ससदान सपालस्य तान्तस्य अनुचरस्य ज्ञानं गुह्यतमं यस्रासर भगवतो तेतम् अन्नभोजन गमिष्यन्ति कृपया दिनवसला येनैव अम्बगवतो भाषति वसति समयानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्परं यतः संस्कृतं ब्रह्मस्थापत्रे अचिकेशितं यदीश्वरेव भगवति कर्म परमणि भावितम् आमयो यस्य भूतानं जायते न सुब्रत तदेव यामयं ते द्रव्यं न पुनः दिविषितम् एवं निर्णय क्रियायोगः सर्वे संस्कृते तयैव आत्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पितः परे एतद् कर्म भगवत् परितोषणं ज्ञानम् तदधीनमि भवति वसमन्वितं कुर्वाणे सकर्मणे भगवत् शिक्षया स कृष्णनन्द गुणनामानि कृष्णस्य स्मरन्ति च नमो भगवते तुमं भासते वाय देमय कर्तुं च इति मूलविधानिनां मन्त्रमूर्तिकम् एतते विपुष्णं सम्यक् दर्शनः पुनः एवं शनिगमं परमन्यव्यत मदनुष्ठितम् आदान्य ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशव त्वमप्यतभृश्रुतं विभो समाप्यतेन विदं बुभुषितमाख्या इदुभे मूढकृतात्मनां संक्लेशनिर्वाणमुसन्तिना निधा हरि ओम तत्सत् जय जय श्रीमद् भागवती महापुराणे पारमहंस संहितां प्रथम स्कन्धे व्यासनारद संवादे पंचम हरे नमः गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति सच्चिदानंद भगवान को ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय निसम भगवान देवस्य धर्म धर्म च भूय पप्रच नंबरं व्यास देवते सुत व्यासो आज विचुमि गुरु वसिते ज्ञान विज्ञान देवता वर्तमान वयस्य तत किम परदुहा स्वयं भगवते आदिरेता वर्तनं देवरं दय कथं चेदं रसासि काल प्रकल्पं प्रकल्प विषय मे तास्तुना स्मृतेन्द्र सुरसतमं नाय जमेव दार काल यशस्वर निराकृते सर्व निराकृते नारदो वाच विचु विप्रवसिते विज्ञान देवति विरमम वर्तमान वयस्य तत तत कारसं एकात्मने आम्ही जननी योजन मुळाचे किंकारी मयात मध्ये ज्ञान करतो प्रश्न अनुबंधनम शास्त्र तंत्र नकल्पा श्री योगस्य ममेचरे निचसै बसे लोक योसा दारुमयी यथा हरि अहम तत ब्रह्मकुले उभी उशिवा तत पेक्षा दिग्दे सकाल विपन्न बालक पंच आने एकदा निर्गताम गया दुवंते निशिकाम पति सर्वो तसत् पदापे ढकरपणं काल जोदितः पदा तदा मिशजवक्तनं समवेद सदा अनुग्रह मन्यमान प्रतिकं दिशमन्तरां स्थितां जन पदार्थाद्र पूरग्र भूपदाकरणं कालप्रादुर्भूत काले ताडिसं धामनीयता प्रयोज्यमानमय दक्षिण भागवतं तन्नार्थ कर्म निर्माण नेपथ पांचभौतिक कल्पांत इदमादाय स्वयं देशुदान्न तशिष ईश्वर अनुप्राणं दिविषं तरहं देव शास्त्र इव पर्यन्ते उताये नमशिश्री चता मारिच मिश्र क्षय प्राणेभ्यो अमृत जग्निरेः अंतर्वैश्य लोकातिन पारियम स्कंदे दबर्ता अनुग्रहण महाविष्णु रविघात गति क्वचिन देवदत्त मीमा बाण सोर ब्रह्म विभूषितम मूर्छयिता हरिकथम गायमान चरान्यं प्रगायत सुप्रियान कृतपाद प्रिय सर्व आवतय मेशिकं दर्शनं यतेचेतसे यतदेव रचितानं मात्र प्रसिद्धया भव सिंधु फलवदृष्ट हरिचर्यानुवर्णनं यमादिर भेरि योगपतै काम लोभ हतो मुकुंद सेवया यद्व तथा माधान समेते सर्वं तदिदमाख्यातं यत्पुष्टो एवं त्वया नग जन्म कर्म रहस्यमे भवत आत्मतोषणं सुतोवाच एवं संभाष्य भगवान् नारद भाष विषितम आमंत्रे बिणप्राणि एव ऐतिचिकमने औ देवचिदान्वयं यत्कर्तिं संगदान्वन गायन माध्यनिदं तंत्र रमय त्यातोरं च कथारियं तस्य जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसंहितां प्रथम स्कन्धे व्यासनारद संवादे षष्ठ हरे नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति ओम नमो भगवते वासुदेवाय सौनकोवाच निर्गते नारदे सुत भगवान् बादरायण सुतमा तद विव्रतं तद किम परम विशुतोवाच परमं संसर्गतम आश्रम पश्चिमेते सम्य प्रासर इति कृष्ण सत्रमर्दन पासिनो आश्रमेते आशुबद्री संडमणिते आशितो भूपस्पृश पणितो दोमन स्वयं भक्तो येन मनसि सम्यक्पणयते मल अपसत् पुरुषं पुरुषं कमायं तदपाश्रयं या संवयते जीव आत्मनते महात्मकं परविमनुतेन अर्थं तद्गतता विपदते अनर्थोपसमं साधे पतियोगमदक्षते लोकस्य जानतो विधा चक्रे सातोत संहितां यस्यां श्रीयमाणायं कृणे परमपुरुषे भक्तुत्पदते वंश श्लोकमो भयापय संहितां भागवते कृतानुक्रम चात्मनु सुखमद भयामास निवृत्ति निरतं मनि शौनको वाच सबै निवृत्ति निरता सर्वत्र प्रेक्षको मुनि कश्यप प्रियतिमे तमात्मनां समवेश सुतो वाच आत्मनां समनिर्गत अपिरुक्रमे कुर्वन्ति ऐति बतं तम्बो गुणो हरे तम्बो गुणो हरे हरे कामं कामाय संदरे समत्यान्वन्यमुभय तेसि सरसंवृत्ति आवृत्ति रोदसितं च खां च भव्यता तेर्कपण हिवद दुष्टादते रसुभैर्चलोटं प्ररहण मदय माना प्रजा सर्व सामर्थ्य तममं सदा प्रलो अपरमालस्य लोकते विदां ततं मतं वासुदेवस्य संजहारा गुणोदयं
तथा च तारस दारुण गौतमिशं भवन्तं मसनाराज पशु दर्शन न्यायते श्रीलाय निशांत दामन तम बद्धाय कुंभलात प्राहद्युन प्रकोपित भगवानं विजयगणं मैनं प्रातः रचित्रात्मं ब्रह्मबन्धु मीमां जय योथा वनागस सुतान अवधि निशि बालकान् मतं वर्मतमन मतं सुसंगावति जनं परमनं विद संबितं नरेको मातु धर्म वेद सुप्रसात्या आधापुमान त्यधापुमान न पठशुद्ध भवता पांचलेषण तो मम आर्षिशिर तस्य मानिनि पुत्र तदसु बदिनां बाबा आदत यात्म बन्धुः बन्धुसर प्रियं दिनं चक्रं किलोपांसन एवं प्रचिता धर्म पार्थ शरण जोरिदां मैचे धाम दुपुर जुतन नियतम जो किनेर ल्यायो बचेको रहेछ जीवन गोविंद प्रेसर दे या पणम तथा यसे ब्रह्मचर्य बदो नाट्य सिद्ध एक पुत्रसु कातुरासर पांडव साप्यने स्वनामृतान वेदकर्तम चक्रं हरणादिकं हरिओम तस्य जय जय श्री भगवती मा प्राणी पारसम हिता प्रथम स्कंदे द्रौणी निग्रह नाम सौतम हरे नमः गोविंद हरे मुरारे ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुतवाता द्वैपायना दिव्ये प्रे पूजिते प्रति पूजिता वान्तुं कर्तुं अतिर्वनं द्वारकं रथमास्तेतः उपले विविधा पन्ति मुत्रं भय विवलान् उत्तरवाच पायि पायि महायोगी देवते जगदपदे नायं तु रवयं पश्येत परस्परम् अभिद्रवदिमामिष सरस्तताय स्वदेव कामं तु अधुमान्नातं नामिक ध्वनिपाठ्यतां सुरवाच उपकारे प्रसुतस्य भगवान् यं भगवं तेजा जाते समसां वेद विकुतभः मामर्थ एतदासने सर्वश्रेणु हेतुते यैनं माया देव्य श्री सर्वभूतानां मन्त्रवैवर्तितं माया जवनिकाचनं मज्ञातोच्छेदमभ्यं न लक्ष्यसे मूढधिरं नटनधरो यदा कथा परमांसर महिना ममलात्मनं पद्ये गतिदानार्थं कथं पश्यमि स्त्रियपुरुषाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पंकजनावाय नमः पंकजमालि नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्राय यथा ऋषिकेश कालिनन्दे वैदि कंसे नरुदातिचरं सिद्धार्पिता विमुचिताहं च सहात्मजा विभूतो ये विनादेन मुहुर् विपदगणा विशान महाग्ने पुरुषा दर्शन दश सभाय परम श्री जगन्निरे सुदिनेकमा तथा धर्मेश्वर तस्मारे विरक्षिता विपद संधुन सस तत्र जगत गुरु भव दर्शनम ये सन पुनर्भव दर्शनम धर्मेश्वर सुरत श्री वीर मान मदपमन नैवर हाथ विलात्वं वै त्वामि जन गोचरं नमो किंचन विताय निवृत्त गुण विरत आत्मनामय शांतय पावे लपतय नमो मन्नतं कम काल निशानं मनादि निधनं विभुं संवत्सरं सर्वत्र भूतानां येन मिथक्कले नवेदकासि भगवत् चिकित्सितं तदे तपि अमानुष निणां विडम्बनं नयस कचित् दैत्योऽधिकारी तिरस द्वेष शेष विषम मतिर्नां जन्म कर्म च विश्वात्मन नादर्श कतुरात्मनं त्रियं ऋषिषु यादसु तरतं विडम्बनं गोप्या ददे तोय कृता कसिता मतापदियाति दश शुक्लीलां जनसं ब्रह्माक्षं भद्रं विनीय भवभावनय पितर्स समान विमोहाय यदिभिरपितत् विभेदे यजितावदगत पुण्यलोक चक्रिते येदो प्रिय स्वान् निभाय मौलय सेवचन्दनमपरि पशुति वसदेवकं याचितो वेगादो आदस तमसजे माय पदाय जसुर विषां पारावतारणाय ने भुवना वै बोधदो शिरन्ते पुरिवाय न चातोयात् मरुवादिता भाविषं कृषिमाननम् अभिते कामकर्मभि सर्वस्मरण मरणहानि परिषन् इति केचन शनन्ति गायन्ति गणन्ति विष्णुः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे इदं जना तये पश्यन्ते चिरनतावकं भावं प्रवाहो परमं पदामजम् आपके दिनार्थम चलते एत प्रभु जिया सशिषु श्वेत श्वेरो जीविना येषां न चान्यतो अवतु पदं मुदं पारायणं राजषि योजितां महसाम् के वयं नाम रूपाभं यदुवि सह पाण्डव भवत दर्शनं यदि ऋषिकानामिवेशेत नेयं सुविश्यते तत्र यथितं कदाधर तस्व रङ्किता बाधेषु लक्षणं विलक्षते इमि धनवदा सुभ्रेता शुभकौशले विरुदन् वनाद्रि न दुतान्नन्तो एतन्ते तव वीक्षते अत विशेष विश्वासं विषमं तेजोते सुमे नियपासमिमां चन्द्रितेणं पाण्डुसुमेण सुतो हि मेनं निविषे मधुर्मो दुःखते जगे भरतिमिं भवतादद्दगमेव ब्रह्मधन् ऋषिकेण किणसगा ऋषभा वन्य ध्रुवराज निपं सुतवना भगवान् विभुजे गोविन्द गोविन्द जसुराति आना पतारे ईश्वर जल गुरु भगवान् नमस्ते सुतवाच हेलो हरि हरि कृष्णे तंकालपदे परिणतकिलोदय मन्ददास वैकुण्ठे मोय निव माया ताम्बा नमित्युपा मंत्र प्रविशन रघुसावया सूर्यस स्वपुरमया संप्राण राजा राज्ञानि भारताभ्यासं ऋषरे आज्ञे कृष्णाभूत कर्मः प्रभो देतो पिन्यासे नाभूत दशुतार्पिता आहाराज धर्मसुत चिन्तन सुरधाम पदं प्रकृतिनात्मनादि नियमो अपसंगतम् ओम मेपचता ज्ञानं निर्विरूढं तरात्मनः पारक शैवदे अर्च बाहुः मे चौहिणी रहता बालक जसरणी पितर पितृप्राप्त गुरु ध्रुव नमेशा निरहन मोक्ष ये पिपर सायुता युते नैनुराग प्रजापद कर्मयो देवदर विषम इति में नतु बोधाय कल्पते शासनम च तेनाम दाद बंधुनाम द्रोह यो सावयो तेता कर्मसु दे मे दे नाम फल बुद्धि कोयतम यदम गण मंगम सूर्या कसुरा कृतं भूतान पतये बेकं नायके माष्टुमर हते हरि ओम तस्य जय जय श्री भगवती मा प्राणी पारसमेतां प्रथम स्कंदे कुंती स्तुति युधिष्ठिरा नतापो नामस्तम हरे नमः गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति विद प्रजातुआ सर्वकर्म विविशय ततो विनशनं प्राय यत्र देववतो पद तलाते भ्रातर सर्विसादस्वै श्रवणभूषिते
अन्नकचन्द्रधरे विद्रा व्यासतो मेधाय तथा भगवान् अपि विप्रस्य रतेन साधनं जय सप्तरि वेरु तथा नृपको वेर इव गुह्यके दृष्टा निपतितं भूमौ देवश्रेयुतमिवामरं प्रणेम पाण्डवा विष्णु सानुगा सहचक्रेण तत्र परमर्षय सर्वदेवस्य यश सप्तम राजस्य तत्रासं त्रष्टं भरतभङ्गवां पर्वतदारगौतमि भगवान् बादरायण प्रियदसु भरद्वाज शिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्र पर्वतः स्थितोके समदोचित पच्वन् गौतमो त्रिच कौशिक दशुदर्शन अन्य समुनियो परमरा तथा यो मल्ल शिष्यरूपे ताजं कश्यपं गिरिसादय तां समेतं महाभागम् उपलब्ध वसुतम पूजयामास धर्मकुल दश देशकाल विभाग विद्गणं तथा प्रभावज्ञासिनं जगदीशं वीर्तितं पूजयामास मायु पात्रविग्रहं पाण्डुपुत्रानुपासीनां प्रश्रय प्रेम संगतानाप्य चष्टनुरागान्ते नन्दिभूतन चक्षुषा अवकटं मौ न्यायमेत्यं धर्मनन्दनं जीवितं नारदक्लेशं विगतं मञ्जुराश्रयाः स्वादिते तीरद्वे पाण्डुकृतबाल प्रजापति युष्मद् कृते भवं कृष्णं प्राप्ततो भवति मोह सर्वं कालकृतमनि भवतं च यद प्रियं रसपालो यद्वसे लोकवायुरि भवना बलि यत्सर्व सुतोराय कदपन पुत्र कणोति काण्डिमुं चापं श्रीके नसतो विवर नये सकल चित्राजन कुमारपे दलित शेतं यद्वि जिज्ञासयायुधं यन्ति भवयोपि तस्मादिदं दैवतम् व्यवस्थ तत्सव तजन वेदोनाथना तथा हि प्रजाः प्रभो यसा वै भगवान् साक्षात् नारायण भुवन माया लोकं गुणसर दिगुणेशो आस्यानुभाव भगवान् वेदकु एकमं शिव देवस्य नारद साधु भगवान् कपिल यम नसे मातुर्यं प्रियं मित्रसुरे तम अकपसदिमं दूतं सवरित लतसारितं सर्वात्मना समदृशे यद्वय स्याना गते तत्कृतमति वैषमनिरवतेशन क्वचित् तथापि कान्तवतेषु पश्य भूपानुकम्पितं यन्मिश्रोस्ते यतशासननागत भवत्य विश्वमनुयसिं वार्तयन्नां कृतं तेदन काले वरमयोगी मुच्यते कामकर्म विषादे वदे भगवान् प्रतिशतं काले वरमया विदितं हीनं मेयं प्रसन्न आसरुणलोचनोल्लसः लसन्मुखाम्बुजो ध्यानपथ चतुर्भुज शुद्धो प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालपर्णं रविकर गौरवरं वरं दधाने बपुरलकुलाभृतानाब्जं विजयसखेरतिरष्टुमी नवद्यां युधितुरगराजो विदुं रविशुभकचलुलितशरमभार्यलङ्कृतासे मम निशितशरभि विद्यमान त्वचि विलसत्कवचेष्टुगृहात्मा सपदि सखिपटुनिशं निमध्ये निजपरयोर्बलयोरतं निवेशधितवतु परसैनिकायुरक्षणयतवते पार्थसखेरतिर्ममटो व्यवहित कृतनामकं निरेशस्तु जनपदात् विमुखचतु चतुर्थ कुमतिं महरदात्मविद्ययाय शरणार्थि परमशतस्य मेष्टोः स्वनिगमम पहाय मत्प्रतिज्ञां नृतमधिकर्तुम् अवप्लुतो रथतधृतरथचारणो वेगाच्चलद्गुहारि रिवहन्तुमिवं गतोत्तरीय शीतभिषिकः तु विषृणतं सच्छेतज परिप्लुता तथा हिनोमि पर्षभम् अभिशसार महद्पदार्थं स भवतु मे भगवान् कतिर्मुकुन्द विजयरथकुण्डभात तोत्रे धृताय रश्मेत श्रियक्षणीय भगवति रतिरष्टमे मुमुर्षोर् यन्ये निरीक्षादकथा स्वरूपं ललित गतिविलास बलवाज प्रणय निरीक्षण कल्पितोर्मानप्रकृतं मनुकृतवत्तुन्मदान्त प्रकृतिं महन्ति लयस्य गोपवद्वा मुनिगण गोपर्य संकुलेन्त सदसि युधिष्ठिराजसूय येषाम् अर्हणमुपपेतैक्षणीयो मम दृशि गोचरेश आविरात्मतमि महमजं शरीरवाजं हृदयदीक्षितमात्मकल्पितानां प्रतिदृश्यं निवर्णैकदार्कमेकम् समधिगतस्मै विभूतभेदमोहाशुतोवाच कृष्णे भगवति मौनवादृष्टिविरुद्धे आत्मन्यात्मनमाविश्य स्वन्तस्वासोपारं सम्बद्धमानाय विष्णुप्रमाणमिनिष्करे सर्वभुवोस्तेदुणिं भयां शिवदिनाते दिनाते तत्र दुन्दुभयो नेतृदेवमानवबाधित ससंसुसाधवराग कान्तु पूर्वोषा तस्य नरनाथेन सम्पर्कसदार्कवेदिष्यं कारयतमोदं दुःखितो तोष्टुपि मुनिहरितकृणं तद्वीनामपि तदर्मिण हृदयस्वाश्रमं प्रयोगुना ततो विचरुगत सहस्रेण गजावयं पितरं शान्तयामास गान्धारं जतवर्षिणं पितृधानु मधुराजवासितभानुमोदित जगन् राज्यधर्मणे पितृपैठामहं विवाहं तस्य जयस्य भगवति महाप्राणे पारमांस समिता पटोन्नन्दे युधिष्ठिरराज परमं नमः हरे नमः गोविंद हरे मुरारे हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय शौनकोवाचम् हत्वा स्वरिक्तस्कृता दत्ता निरीक्षरधर्मविदं वरिष्ठसहानुजय पर्देवरुदभोजन कथं प्रवृत्ते किमकारसितसुतवाच वंशं कुरु वंशदवाग्निर्हेतं संरुहयेत भगवभावनुहये निवेशयितं निजराज्य ईश्वरीदृष्टिं प्रीतमना बहुवनिशं विष्णुतमथा चितो सम्प्रवृत्त विज्ञान विद्युत विभ्रम ससासकामिन्द्र इव जिताश्रय परिदीपान्ताम् अनुजानुवर्तितः कामं भवशवर्धन सर्वकामतो गामयि शिशि सूक्ष्मप्रजाङ्गाव पयसो धस्वतिर्मदन् नत्य समुद्रगिरेय सवनस्पतिरुगा फलन्त्यो सदय सर्वकाममन्धि तुतस्य वै नादय व्यादय क्लेशदैवकुतर्म हेतवाजात सत्रभवं जन्तुना व्यागिकरिः हिंसित अर्धन पुरेमासं कतिपयानरि सुरिता विश्वकाय सुश्रुत विकाम्या आमन्त्रिता विनिज्ञात परिषद विवादितमारु अर्धं कशित परिषद विवादित सुभद्र द्रौपदी कुन्ती विराट तनया तथा गान्धारी धृतराष्ट्रस्य युजुः गौतमैव
Berikutnya saudara umat setrio masih ada nasa ere bimu yang dobiram sangat dan nana sasanga namu ketusan maatum nosa ade budak ketika namanya suya sesuatu kita karena tujuan tasmin ya tadi apa persayan biram patang tasuna pasang pasasan la pasayan sana bojanai sarve de nimishera se taman guru ke de se bijantar sneha sambada bicharu tatra nerum dhannu galad basva mautpande deva kishute nirya degaran novadra miti se ad bandhavastri yan miridanga sangaviriya se bina bana bhagavamaka dundur yanaka ganda dya netrusum duvaya tatha hari hari प्रसाद शिखरारूढ़ करुणा हृदय ब्रेशो कुसुम कृष्णम प्रेम विलासमी देखना सीता तपत्रम जागरा मुक्ताता में विभु सीता रत्न रघुड़ा के साथ प्रिय प्रिय तमस्य उद्धव सात्य की सर्व बेजने भरमा दुदे विक्रिय मान कुसुम रेजे मधुपति पदे ऑस्ट्रियन त्यासी सात तत्र तत्र ये रीता नानुरूप अनुरूपास निर्गुण सुगुणात्मन अन्य निमासी संकल्प समर्थ गते देशम पौर मित्र पुरत्रिणम सर्वस्व तिमनवारः सबै किलायम पुरुष पुरातनो य एकाचित अभिषेक आत्मने अवृत पुण्य भो जगदात्मनि ईश्वरे निमिलितात्मन निशिषु दशो एव भूय निज वीर्यो निज वीर्य ज्योतिदाम स्वजीव माइन प्रगतिम शिष्टि चैतन्यम अनामरूपात्म अनुरूपनाम अनिपिति समानो नुससार रात्रु सभा अयम यत् पदम प्रसुरे जितेन्द्रिय निर्जित मात्र विष्णु पर्जन दिवसु कलेता कलिता मलात्मना ननिश सतम परमाशु अर्हते सभा अयम सखेनुकी दशत्पद वेदसु ये सुजकु यवादिविष एय केयु जगदात् मलिले सुयुते बतते न तो रसाजते यदा यदार्मणे तमो धियो निर्भजीवन्ते तत्र शैषं ततकिला लीला दाते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि तदत् युगे युगे औ अलम लागे तमं यदो कुलमो अलम पुण्यतमं यदोर्वनं यदे समुंसा ऋषभ श्रियपति शोधन मनचं कर्मणि वंचान्ते औ बतसार्य ससित सासस तिरस्कारी कुशलकारी पुण्यसस्कारी बहु वचन नितम यदनु ग्रह चितम स्मिता बलकम शोभाति मयत् प्रजा नूनं प्रदर्शना न होता दिनेश्वर समर्चितो यस्य क्रीत पाणिति पिबन्ति आसकेदार मतं बहु पचश्री हर्षम मोमो जदाश्रय यादि यशुन के नायका स्वयं बरे प्रमत्त चैते प्रमुख निशुष मेण प्रतु न संभाम बसुता दयो पर यसा यता बहु भवति सहस्रसे यता परं तम पास्त पेसलम निरत सौजं कर्तव्य साधु कुर्वति आसं किरत पुष्करलो तन पते न जात तो पयते देवी हृदय कृष्ण एवं विदागदं तेन भागीरपुरी योजितं निरीक्षणा ना विनन्दन स्मित तान प्रथमसंधे नमि शिवभाग्यानि श्री कृष्ण द्वारका गमनं नाम दशम हरे नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति बोल सच्चिदानंद भगवान को अनुहा प्रोजुरासर गले यकिरपितनं सर्वसो हेदम अभिधान विभार भगा नतस मते नातस नांदिमं गजं बिरिं जबैरिं जोजु निन्द्रबंदितं परायणं शिवमिय च तां परं नये प्रकाल पर्वे परप्रभो भावाय नतं भव विश्वभावनं तमेव माता सुरेपित पते पिता त्वं सद्गुरु न परमं सदैव नमः येषां निबलिता कुर्तेन भवो निम्या औ सनाता भवतास्म यद्वयं त्रैविषपानमभिदुर्दर्शनं प्रेम समितस्निग्धनिरीक्षणानं पश्चिमरूपं तव सर्वसर्वगं गिरिं भुजाक्ष प्रससार भो भवान् कुरुन् मदुम्बात सुरिद्धिर्जय तत्र कोटिपतिम चनो भव रमिं विना खणोदिवना सवाचुदम् इति ज्योतिरिता बाचप्रधानं भक्त वर्षलक्षणा श्रवणानो नुग्रहं दृढपितन् प्राविशदपुरं मधुभुजदसाहार पुरान्धक विष्णुवे कुपुरान्धक विष्णुवे आत्मदोलेबलरे भूतं नागैर्भो भवते निव सर्वतु सर्वविभव पुण्यतु जलताश्रमे उद्यानो पवनारामे प्रेतपद्म करश्रियं पदमा करश्रियं गोपुर द्वार मार्ग सुकृत भौतुकतोरणाम चित्रध्वज पताकाग्रहं तप्रत्याता तपं सम्मादितमां मार्ग रथापन कतत्वराम सीतां गन्धजलैरुतं फलं सतितां गोले द्वारितरकिरणं सम्बद्धदचित फले जवे अलङ्कृतं पूर्णकुम्भै बलिभृ धूपदीपके निशम्य प्रेतमायान्तं वासुदेव वसुदेव महामनः गुरसुग्रसेन स रामसद्भुत विक्रम प्रतुम चारुदर्शन साम्बुधाम भटिषुतां प्रहत्स वेगो सीता सायन सनभोजन बारेण पुरुषत ब्राह्मणे ससु मंगल संपत्ति अन्यादनं ब्रह्मकोशण चादिता पटुज महरत हेट प्रणय गत साधुसाः बार मुख्य ससदसो यानेत दर्शन सुखाल सत कुंडल निर्वात कपुल बदन से नतन रघु गंधर्व सुतमा गतमंदिनी गायन्ति चोत्तम श्लोक चरित निर्भूतानि च भगवत् तत्र बन्धुना पौराण मनुभक्तिनां यथा विद्युपसंगम सर्वसमान माददे प्रला प्रौहाभिवादना शेष परस्परस्मै देक्षणे अस्वासकाशुकाके वरिष्ठाभिमतर्भिः स्वयं च गुरुभिर्विपदेशभारे सविरेरवे आसेभिर युज्यमानो नैबन्दिभिः चाविशरपुरं राजमार्गे गतगण द्वारकाय कुलत्रय आर्म्यारुरुहुर्भिः प्रतरिक्षण महोत्सवः
नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारगोपसन्नैव तृप्यन्ते दृश्यश्रियो रामाङ्गमच्युतं श्रियो निवासेश्वर पानपमुखं देशं पावलोकपालां सारङ्गं पदां भुजं सीतातपुत्रपेजने रूपस्कृतं प्रसूनपश्यत् विवसितपदि पिशङ्गवाचं वनमालया भवभानो यथार्गो दुपचापवैद्युदयं परुषतु गृहं पितरपरिषत् समादेवी भवति श्रीशासगदेवी ब्रह्मगामदातापुत्रमङ्गमारपस्नेहतपयोदरावे हर्षवियोलितात्मानं शिशु नेत्रजय जले अथा शिशु भवन सर्वकाममनं तमं प्रसादय प्रपत्तिनं सहस्रं सपत्निपतिं अनुपागतं विलुप्ति संजातमनुभवोत्सवः पुष्पदुरादा पुरुषासना सया साकं वर्तते विदितलुतना नन तस्मात् तमात्मजेति दिविरन्तरात्मन दुरन्तभाव परिभिरे पदं निरुद्धमाप्याक्रमणं भुजत्रय विलज्जदिनं विगुपयव इक्लवर एतत्तेषु पाठिपतुरौ गत तथा वितर्षान् एवं नवं नवं पदे पदेका विरमि ततत्पदाचलदेयजनजः विगर्हि चेत् चलापेयतस्वेर्न जहाति करिहि चेदयं निर्पाणम् सिद्धिवारजन्मनं मोक्षेणि परिवृतते संविदाय वैरं सुसन्नो यदा नलं मिदुं वदेनु परतो निरायुध सहीशन लोकेशन अवतीर्ण समाय रेमि त्रिरत्नकूटतो भगवान् प्रकृतयता उद्दाम भाव पिशुना मलबल गुहार जबृडा बलुगनिहा तो मदनो पियासं सम्मुय चाप मदः प्रमद तमास्ता यसेन्द्रियं विमदितं कुवगे नसेगं तमयं अन्यते लोकेशंग भविषंगिन मातुं भूमि नमनुजं व्यगुण नमेतो बुधये एतद् ईशानमीशस्य प्रकृते तपि तत्कोणे नैयुज्य सदात्मस्तरि यथा बुद्धितदाश्रया तम मे निदेवला मूढ़त्रयं चानुभवतं रह अप्रमाण विदो भवतो ईश्वरं मतयो यदारियं तस्य जय जय सिंह भागवती महाप्राणी पारं संहिता प्रथम स्कंदे नैमिषो पाख्याने कृष्ण द्वारक प्रवेशो नाम 11 हरे नमः गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय सौनभोवाच अश्वत्थाम रूपश्रेष्ठेन परमर्षिणो तेजसो उत्तरायत गर्भ ईशिने जीवित पुनतस्य महाभूते करुणे जमात्मने निधनं ते देवासे सप्रेतो गतवान् यथा पदिनो शब्द मेजाम पदिनो मेदि माने श्री ब्रह्म सर्वदानानं यशका नमदा चुकसतो राज अभिपल धर्म राज पितृवत रंजन प्रजा निष्क्रिय श्रकान निरत किनपाद से भय संपद कृत लोक महिष भ्रातरमय जमुदीपाधिपत्यं च यशस त्रिदिवं पदं किंते काम सुरस्पार हा मुकुंद मनसो दिव्या आदिज हुरुर मुदम राज चोदित स्तोपसर जिदात प्रापद शेतौ कसुर्द मुक्त संगपद मारि जिज्ञासितात्मया तात्म्यो मुनिर्व्यसुतादश एतदन निर्भंगामिया सत्यद्धा गोतो भयम इति दागे उपादेश विप्रा जातक को विद्या लब्ध पचितया सर्व प्रतिच मोषकान गृहं सहेश लोक विख्यात परिचित इति हेतुपूर्वक गर्भित त्रिष्ठ मनुतेन परिचित अनरेश्य सराज पुत्र बवृदे आशु शुक्ल एवोडुवा आपुर्य मान पितृभि काष्ठभिरि वसोन्नोम यक्षे मानुष मेधेन ज्ञाति तुर्वाजिया से राजा लब्ध धन उद्दद अन्यत्र कर दंड तदपि प्रेतमालक्ष्य प्रात्र चुत धनम प्रहीणमाज हुरुदिच्छं दिशि भूरिश तेन संभृत संभारो धर्मपुत्र युधिष्ठिरबाजी मेधैस्त्रिभिर्वेद यज्ञ समजाय धारि मावतो भगवान ताके यजय तद विजय निपम उवाच कथिचिन मासं सुरेतं प्रिय काम्या ततो राग वेणु ज्ञात किरणया सह बन्धुवे एव द्वारपतिं ब्रह्मशार्जुन यदुभिर्वृत हरिओं तस्य जय जय भागवती महाप्राणे पारमहंस संहिता प्रथम स्कन्धे नैमिषोपाख्याने परिचित जन्माद्य उत्कर्षो नाम द्वारा हरे नमः गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुतोवाच विदुर तीर्थयात्रायां मैत्र्यादात्मनुगतिं ज्ञात्वा गाधास्तेन पुरं तवावा तविवसित यावत् कृतवान् प्रशं चतपौ सारवाक्यनिकालमधा भासेशाकृतो देववत्सुकं धातुति रसश्रेयस्के सर्वेषां प्रतिमा भवन अभिभक्तारे महा आंतरि मादन्नम यथापदककारिषि यावतदारसूत्रस्थं तापाल भस्वसतमेव विदितिरुलौदराज्य त्रिटपोत्रकुलन्दरं भ्रातृ लोकपालाभिर् मुमुदे प्रेयश्री एवं प्रियस्वत्कानं प्रमन्तानन्तदीयर्ष आर्तिक्रामदविज्ञातकालपरमधुतरं विदुरस्तदविप्रेतधृतराष्ट्रमवासत राजनिगम्यतां शीघ्रं पश्यतं भयमा कथं प्रतिक्रिया नयस्य कुतस्य कारिषि प्रभो साई भगवान् काल सर्वेषां न समागत येन चैवाविपण्णोऽयं प्राणी प्रियतमैरपि जनसति विमुच्यते किमुदाने धनादेवी पितृभ्रातृश्री पुत्रा अतार्ति विगतं स्वया आत्मा तदरया ग्रस्त परके हम उपासते औ मयसि जन्तुर्जीविता या भवन भीमा भवदितं पिण्डमाद तिक्रियपालवत अग्नि निशित तत्तस गरुदारस तुषिता एतं क्षेत्रमद्रि जय सवेते उदायकं यशोकात् परदुर्य दत निषेधात्मने हृदिकृत हानिं ज्ञात प्रभवर्जित स नरोत्तम अतो दिशं दिशं यातो सूर्यका तगतिर्भवन हेतुर्भाक्त्राय सकल पुंसा गुणविकर्षणाम् एवं राज विधिरेणां जेन प्रज्ञातसुर बोधिता मात्मनो अजत स्वतंत्र तुझ प्रभु पादमनुस्मरण संजो वादनां वेद विवसितं पितृकुलनन्दन गान्धार्य महाबहु मुषितो महात्मा अथ जगम भगवान नारद सहत्वं गुरु पठुते या वेवाद्याः सानुजतन वेद चयन्निव युधिष्ठिरोवाचनां वेद गति पितृ भगवान कगता पिता अम्बाव अथ पुत्रार्थ कगता दद दक्षिणी प्रणता एव पारे भगवान पारदर्शकम् अथ भवसि भगवान नारद मनीषतम माकञ्चन शुशोराजन यदि सर्वसं जगत् लोकस्वपालय जेम भवति वदिमिषित ससं युन देवतानि सएव व्युनक्ते च यथा गावो नसे प्रदत्तन्त्यां बद्धसु नाम विभागन्तं नाम विर्बद्ध बहन्ति वदिमिषित
यदा किरणोपस्काराणां संयोग विगमा वियि च कृतं चातं तथैवेश्यस्यानिनां यन्मनसि ध्रुवं लोकमध्रुवं भानसु भयं सर्वदा नैषु च निहारं निरनुवदा तस्मत् जयं वैकल्पमज्ञान कृतम् आत्मना कथं तु नाथा कृपाण वार्तेनं ते च मान् भिन्न कालकर्म गुणादीनो देवं पञ्चभौतिक कथं न तु गोपाय सर्पग्रस्त यथा परम अर्थानि सार्थानाम् अपदानि चतुष्पदं बलमुनि तत्र महतं जीवस्य जीवनं तदिन भगवान् राजनेकात्मात्मानं शरीरं तरुणन्तरवादि पश्यतं आयोरुदा श्रूयमते महाराज भगवान् उदवन् कालदु भगवतिर्नोषम् अववाय सुरद्विषं निष्पादितं देवकृतं अवश्य सम्प्रतिष्ठते यावद् इयमवे चेदं भवेद्यावदि हे स्वर तदरे सह प्रातः गान्धर्य स्वभार्या दक्षिणे नैमवतरिषमासुवं गतस्नोतवे श्रोतोभिः शब्दवीर्याम्बै स्वर्धिनी शब्ददा वेदा स्वतानं प्रत्ययनाना श्रोत प्रत्यक्षते स्नातनुसवनं तस्मिन् भूत्वात्मनेताविधि अवचौक संदात्म सार्थ विगतजन जितासन जितश्वास प्रत्यय सनिन्द्रिय अधिभावनया दोतरसत्नमो मलः विज्ञानात्मनिशम्य सिद्धिके परिविलापितं प्रमाणात्मानमाधारे घटमरनिभाम्बरे दोतमय गुणधर्म निरुद्ध करुणासे निवर्ति अखिलाहार आश्रितं विवादलतास्यान्तराय मयिबाभो संयत किल कर्मण सवाद्यतनाद्राजन परतोजमियानि काले परमाजते सोम तत्सवस्मि भविष्यति जयि मानेन वीरजे पतुपति औडाजे भवितपतिं साधि तमनि मनु भेषति विदुर तदा सर्वं निशम गुरुनन्दन आसुसु कायुत तस्मात् बन्तात्र तने सेवक येतुक्ता भारुवर स्वर्गं नारद सह कंबरीति किलोपसद सहिति कृत्वा जात सुचार्यं तसदेजेसु भागवती महाप्राणे पारम ओम नमो भगवते वासुदेवाय संप्रति द्वारे काम जिह्नुपं दिदिरेच ज्ञातं च पुण्यलोकजन निश्चित विशेषं दैते कतिजन मास तदना एतदर्जुन ददश कोट रूपाणि निमित्तानि कुरुद्वा कालस्य जगतिं रोदनं विपरीत उद्धारमेण पापी सुनिनां भातं कोटलो भानिर्तात्मनः जीव प्रेम वैवरितं साठमिश्रं तसौर्यं पितृमादि सुरेन्द्रादि दम्पतिनां च कल्पना निमित्तान्यतरिष्टानि काले तोनि गतिनां लोभात् धर्म प्रगतं दृष्ट्वा जनजं निर्पदिक्षुरवा च सम्प्रसिद्धो द्वारकायं चिनुपं दिदिरेच ज्ञातं च पुण्यलोकजन निश्चित विशेषं वतः सततो नामास भीमसे नतवानुजनायति कर्षिपाय तृणां वेदितमञ्जसा अपि देवक्षणादि च सकाले यमुपस्थितः यदात्मनोऽङ्ग ससं कुल्यभूतकणज्वलिते वरुदसि नन्दसु सुपीतौ सदां शिच मनं शिच न सुलत्तेगाजन कालेन चिम्बिराशति नदि मन्ति सनं पसन् नदुयन्ति च मातरा रुगन्त सुमगावो नैरिशन् ऋषभावृजे दैवतानि रुगन्ति प्रस्ते सिद्ध्यन्ति चलन्ति दैवि जनपदग्राम पुरोदन कराश्रमं प्रशस्व निरानन्द किमु दर्शयन्ति न मन्ये यद्रमोदपाद नुन भगवत पद अनन्य पुरुषस्य विहीना भोर हतसो भग इति चिन्तयतः द्वेषरिचिनिति दश राज्य प्रतगमत् ब्रह्मन् यदुपरि अपपितया तम पादरन्नीपते तमयत ब्रूमातुरमाथोपदन्नमबे नवबिन्दुन सिरतं नयनादेव बिलिपिर्विघ्नहृदय विजय मनुजम् क्वचित् राजाओ को जीवत सर्वपुत्र सुतानुजयन्ति ससुतगुर जयन्त गतसारणा आसते कुशलं क्वचित् एतसत्विदालय कुचिता तुजुकमरा भगवान् रत्नं प्रभु पद्म सर्वविधेन सुखमातारद गम्भीर रयो अनिरुद्ध वर्धते भगवान् तत् कृष्णे चाल्येन जाम्बवती सुता अन्य जगानि बर्बरा समुद्र ऋषभाद तथैव अनुचरा सौरि सुतैव तवादे तदो आहारं महावनाः सारथ्य पारं सदस्येव न शक्यतौ त्यक्तिरासनानुगमनस्तवन प्रणामान् नैरजमानु जगन्मणिं जपिनो भक्तिं करोति निपति चरणारविन्दे त्वयैव तस्यैव प्रथमानस प्रवेशं प्रति मन्वं नातिकुलि किलाचरमि यदा चेत् तन्यबोधमे धर्मपदैकेन धरन् विषयमुपलभ्यतागां पृच्छते श्वासुबदनं विवत्स निपुमातरं धर्मौ भाच क्वचित् भद्रे नामयमात्मनस्ते विचायासीं लायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भवति मन्तराधिं दूरे बन्धुं शोचसि कञ्चनाम्ब पादनिनं शोधसि मयि कपालमात्मानं भद्रीशरे भक्षमाणम् आहु सुरादिन हृदये गिवागन प्रजाउत सिन् मगवते वर्षते हरेक्षमाणः तेउर्विबालं शोधस्येतो पुरुषादौ विवातां भासन् देव ब्रह्मकुले कुकर्मणे ब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्रहान् हरिहरे किं क्षत्रबन्धन कलिनो प्रशिक्षण राष्ट्राणि बातैरवरोपितानि ततोपासनपानवास स्नान व्यवायन मुखजीवलोकने यदमां मते गुरिवरावतारे कृतावतार सारे दरिद्रान्तरिक्त स्मरते विशेषं कर्मणेवान विलम्बितानि इदं मम क्षमतमादिमूलं वसुन्धरे येन विकसितासि कालेन बाधे भरिण बलि यशस्विरक्षितं किं निहतमां वसौगलम् धर्मवाच भवान् एतत्सर्वं यर्म धर्मं पृच्छसि तत्रुवि वर्तसे येन पादलुकसुखावय सतंसुतनया शान्तित्यागान् तुषार्जवं समुदम तपसातं तिथिं परदेशोदं ज्ञानं धीरैश्वर्यं सौन्दर्य वनस्पति स्वातनं कौशलं कान्तिदार्यं मार्गमेव च प्रकल्पं प्रश्रयशीलं सभादयः दिवचार्थे आयराजं कुटुम्बभरणे नवद्या पदे कलत्राधीश्वात्मसन्निश्वसस्वभि तेषां परमतनिधनं पश्यन्नपि न पश्यति तस्मात् भारतसर्वभात्मभवन् ईश्वरवान् शब्दौ कृतदेशस्महत्तव्यस्य सदा वयं महा एतावान् सांख्ययोगाय स्वधर्म परिनिष्ठे धनोलव परमंसं अन्तेन गणस्मृति प्रायण मू नयो राजनिवृत्त विधिः सेदत न्यगुणे तारमं तस्मै गुणान् पदने हरेः
इदमागतो नाम प्रणप्रसमितं अदितवान् त्वापरतो पितु द्वैपायनादं परिनिष्ठो अभिनयगुण्य उत्तमस्तो गलिलय गलिदस्य तारादर्श्य आख्यानम् एतद्धीतवान् त्वां ते विदास्यामि महापौरुषिकवान् यश्च सददता मा सुशान्मुकुन्दिमते सते यतं विद्यमानम् इच्छतमकुतो वै योगिनं रूपनिर्णितमारिणामान् कर्तनं किं परमतसवो विपरोक्षराय नैर्य परमूर्तं विदितं कटितश्रेयसे यत खड्वाङ्गो नामराशि ज्ञाते त्वामियानुसमूत सर्वोषिर्यगतवान् अभयं हरिं पावापेतायि कौरवे सौतां जीवितापदे उपकल्पय तत्सर्वं तावत् सम्परायकमन्तकल्पितो पुरुषागतगतसद्दोषच्छेदादसङ्गसद्रण प्रियां देन्वे ददम वीर्यतोपजितो धीरपुण्यतिकृतलापितसुतो विविधासीनं विधिवत् कल्पितासने अभिषन् मनसा सुतं त्रिविध ब्रह्मचरं परं मनो ये चेतितश्वास वर्म बीजमविस्मरणीय च विषये विवेचन मनस प्रतिसारते मनकर्म विराजितो सुखार्थधारयति तत्रैका भवयम् तत्रैकाभयवं ध्यायेदभिच्छिन्नेन चेतसा मनोनिर्विषमेत तत्र किञ्चित् न स्मरेत पदं तत्परमं विष्णुं मनो यत्र प्रसीदते रजस्तमविभाजितं विमूढमनात्मन यच्चारणेय दिलो अन्त्य तत्कृतं बलं यशं सन्धार्यमाणाय योगिनो भक्तिलक्षण आशु सम्पदते योगाश्रयं भद्रमीक्षता राजुभाजः यथा संधारयते परमधारण यथा सम्पदा यदृशि पाहारिदासु पुरुषस्य मनोबल शुष्कवाच्य चित्तस्मृतिश्वासु जितस्मृ जितेन्द्रिय तुल्य भगवतोरुपे मौन संधारय धिय विशेषतस्य देवोऽयं पवित्रसिद्धवेयसाम् यत्रेदं दृश्यते विषं भूतं भविं भवच्च सदान्न कोशेर्यसुं सौता परमसभेदु वैर्यदु पुरुषेषु भगवन्ताङ्गनाश्रयं पातालमेतत्सैपादमूलं पठन्ति पाणि प्रपति रसादलम् महातलं विश्वसित तलतलं मे पुरुष जंगने द्वैजाननि सुतलं विषमर्ते रुद्र पितं तलं च महि तलं तजगन महि पदे नव तलं न विषरुगिणं देवरु तलं ज्योतिरनिकम सग्रीवा महर पदनं वै जनस्य तपोरादि विदुरा दिपुं सत्यं शेषां जदर्शन गत बाबावृ श्राह कणु देश सूत्रममुष्य शब्दः हरि हरि नासत ततो परमस्य नासि गणाच्च स्कन्दो मुखम् अग्निरिद्ध देवरक्षणे चतुरभूत पतंग पक्ष्माणि विष्णुराणि ओवेच तद्भ्रो विश्रीम्ब परमेटेन मापुच तालु रसैव जुवा चिन्दास्य नन्दस्य शिरोगिणाते दर्टायमस्नेह कलातिजानि आसु जन्माधकारी जमाय दुरन्त सर्वये धमाङ्गमक्षप्रीडोत्तरोष्टोदरैव धर्मस्तनो धर्मपथ सदृशमकर्ता से मेडम विष्णु जमे द्रकुशि समुद्र गिरिवति जंगन अद्वस्य नाटक तनुर्वाणि मयूरुवा विश्वतनु नृपेन्द्र अनंत वीर्य सुशीलं महातरेश्वर गतिर्वय कर्म गुण प्रवाह ईशस्य केशं विदुरं भवाहं वाससु सन्ध्यं कुरुवर्य भुवनो अभ्येतमावृतं मनुष्य सचन्द्रवासर्व विकारकोश विकारसत्यं महिमा मनन्ति सर्वात्मनोतकरणं गरितम् अश्वासतार्युष्टगजाकनखानि सर्वे मेघापशुपशुनिदेशे वयं शीतद्व्याकरणं विचित्रं मनोरमनिशं मणि निवासकन्दर्भवितरचनां सरस्वरस्मृतिरसुरानीकवीर्यः ब्रह्मानं च द्रवजो महात्मा विदुरुरङ्ग्रेश दगणवर्ण नाना भेदा बीज्य गणोपन्नतर्वात्मक कर्म विधान योगा इयानसा ईश्वर विग्रह सक यश निवेश करितु मया ते संधार्यते सुन भवसि तविटे मनस बुद्धय नयतो किंचित न सर्वधे ब्रेत्तेनुभूत सर्वात्मा यतसो न जने चितेगा तम सन्धिमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सज्जते यथात्मपातार्यं तस्य जय जय श्री भगवती महापुराणे पारं संहितां द्वितीय स्कन्धे महापुरुषस्थानवर्णने प्रथम हरे नमः गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शुभवाच एवं पुराधारणयात् मयोनिरसं प्रतिबरोधतो तत्त्वतः ससर्जे तममो गतिरितं यथार्थ्यात्कार्योदय बुद्धिशब्दसे परमणे सपन्तान् येन्नामभिर्ध्यायते धीरपाठे परिप्रमतत्रणभिन्नतीर्थं मायामय वासनय शयनाथ कविनामद्व्यवसस्यात् प्रमतो व्यवसाय बुद्धिसिद्धे यथार्थे नयते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्ष्यमाणः हरि हरि न सत्यं चितौ किं कशिपु प्रयासे भाव शशुदेव वर्हणे किं सत्यं चलो किं पुरुधान पात्रति बलकलादो सति किं सुकुले चिराणि किं पति न सन्धिरीक्षा नैवं ग्रेपा परवृत सरितो विशिष्टं रुद्र गुहा किं जितो बतिनो वसन्नन कस्मात् भजन्ति कवयो धनतो मदान्न एवं सोचिते सुदैव वसितात्मा प्रियोर्थो भगवान् अनन्ततं निर्वृतोनि यथार्थो भजेता संसार हेतु परम सयत्र कर्तम तनात्रित परम चित्तमृते पशुन सत्यं नाम यत् पश्यन् जनपतितं वैतरण्यं सुकर्मजन् परित पाञ्चषाणां चिचिषुदेयान्तरे देवकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं तत्र भुजं कञ्जरथा अङ्गशङ्खं गदाधरं धारणया स्मरति प्रसन्नभद्रं नलिन्यतेषणं पदं किञ्जल गुमिषं गवाससलसं भुभङ्गसंशुचिता भूर्यनो ग्राम विचित चिन्तामयेन नमिशनं यावन् मनोधारणयावतिष्ठते कैकशृङ्गानिधियानुभावयेद पदादि यावदाचितं गदाधृतं चितं चितं दानमपयदारे परं शुद्धति यथा यथा यावन् जायेत परापरिशुं विश्वेश्वरे दशैव क्रियगतावतवीय पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतस्मरेत तेरं सुखं चासनमाश्रितो यति यदाज्यासुरीरं मङ्गलोकं काले च देशे च मनो न सज्जयत प्राणनियतं मनसा जिताशु मनो सुबुद्धमलय नियमचिद्रगेत नियमित ममात्मने अमात्मने आत्मानमात्मने भगवतीरुलब्धो पसन्देविरमेतकृतनयत्र कालो निमिषं परप्रभुपुतो जगतां ययि श्रीनयत्र सत्तं नरस्तमसनं न वै विकारो नमः पर्वाणम्
हरिहरि प्रधानं परं पदं वैष्णवमामनन्ते तदयन्येति नियते तदुस्य शिर्जवं विसृज्य दौरात् मननान्य सौरिदाय वेदोपगुया अपदं पदे पदे तं वैशानरम्या दिव्या यसा गत सुषुम्नया ब्रह्मपदे नजुज विदुत कल्पोदारि उदास्तात् प्रयादिचक्रं निरपसै सुमारम् संसार देगत्य साधे नैयाति विज्ञान तत्त्वं सन्निरोधं तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तमानन्दमानन्दमयो वचन एतां गतिं भागवतीं गतो यः सवैर पुनरन्यविसर्जतेङ् यते सिद्धि देने भवेद गीते तोया विक्रीते आसना तने जयोवि पुरा ब्रह्मणाः पृष्ठ आराधित भगवान् वासुदेव नये तनु सेवा बंधन वियोग संस्था वि वासुदेव भगवती भक्तियोग देतो भावेद भगवान् परम कार्य तीर्णं बीच मनीषया तादद् वर्षित कुटा तो रागिरा में तो भावेद भगवान सर्वोदेव लसित स्वात्मनाहारे देशे बुद्ध्यादि विरुद्ध लक्षण अनुभाव भगत तस्म सर्वत्र राज नरसत सर्वदा सुतपित्र बेसन मतवे भगवान् पिबन्ति भगवता आत्मन सतां कथां मृतं सर्वणकोटि समृतं गुणन्तिते विषय विदुषिता स्वयं प्रजन्ति तत्चरण सरोरुहान्तिकमरियं तसद जय जय शिवदाय कुमार पुण्य पारम समेतां दिव्य सुंदर पुरुषोत्तम परम नाम दिव्य हरे नमः गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण बोल सच्चिदानंद भगवान को ओम नमो भगवते वासुदेवाय शुचकोवाच एवं मे तन्निगदितं दृष्टवान् यद्भवान् समन्निणां यन्मिरिमाणं मनुष्य मनीषां वर्म वर्षस कामर्तो एजत ब्रह्मणस्पतिं इन्द्रमिन्द्रिय कामर्तो प्रजाकं प्रजापतिं देवीमां इन्द्रशिखां तेजकां विवाहवसं पशुकां ओवसंसारं वीर्यकां मद प्रियवान् अन्नादे कामर्तो एतं शोर्ककां पतिते सुतं विश्वान्ते मन्दिराज्य कामर् साध्यं संसारभविषाम् आयुष कामर् सिनो देव पुष्टिकां एलां विजय प्रतिष्ठा कामर् पुरुषो रोदसी लोकं मातर रूपा दुकामर् पदर्वान् त्रिकामर् सर्वोर्वशं आदि प्रत्येक कामर् सर्वेषां एजत परमेश्वरां एजत इसस्कामर् योग पोषाका मंपत्यदसं विद्याका मतिकरेशं कामपटं तन्मां सत्यं धर्मार्थं उत्तमं तांतु तांनो पितरण एजत रक्षका मपुण्य जनन उदस्का मवरत्मनां राज्यका मोहन देव निरतं तो विचरण एज मोहन कामका मयजका सोम मकाम पुरुषं परम अकाम सर्वकाम व मोक्षका मौदार तीव्रण भक्ति योगेन एजत पुरुषं परम यतमा नेव एजता मियानि श्रेयसोदयः भगवत चलो भावो यद भागवत संगत ज्ञान मेधा पते निवृत्त गुण और विचक्र आत्म प्रसाद उदयत गुणेश संग कैवल्य सम्मत पद तत्सम योग पुण्य भेतो अधिकता सुरातिम न कुर्या सौनको वाच इत्येवि व्यायतमराज निसमर्पस्वत् किमन्यत् पृष्ठभान भो भो वयासं निलिशं कविं यतस्तुषताम्बितं स्तोतनो राजिं आजितं परं हरिपदो दर्गसातां शुभ सदस्य ध्रुवं सविहर भागवतो राजा पाण्डवी महाराज बालकृष्ण गणगण गणगण व्याहरदे वयसविस भगवान् शिवरायण उरुगाय गुणोदार शतं शिव समागम आयुर् वरदे वैपुंसं मोर्धन तं चयन्न सता तास्यते यजनमिदो कमलक वार्तया तारव किन्न जीवन्ति भयत्राक्ति न सुसन्तोषा नकालदे नमयन्ति किन्द्रा वपसव परेश्वबिड वराहोष्टकाले शास्त्रे पुरुष पशु नैः कारण पतो केतु जातु नाम कदागतविले बतरु कर्म विक्रमान्ये नृणत गणकुटे नरस जीवसतिता दुरिके वसुदन्न चोपगाय तिरुगाय गाथा पाल परम पटगिरि गजुतम प्रियोत्तमांगं ननमे मुकुन्दं कावो करोनु कुरुत सबरे मारेल कांकनकं गणोवारि भरियायते ते नय निनाराम निनानि पुरं नरे जतो ये पादु नरणाम तो तुरुंज भवादु जत्राणि नाम बजतो भारिलो जीवत्स भवागवतं गृणं जातु मर्तो दिलरे तुयसु शिवनु पद्या मनुज कुलस्य सुस सबयस्तु नदे लगनं तदा संसारं हृदयं बतेतं तद यद् गिरियमाणि हरिनामदे नभिग्रियता तयदा विकारो नेत्रे जलं का द्रव्ये सुवासनाथा विधेयं अमरो नुकुलं प्रभासजे भागवत प्रधान यथा वय सविरात्म विद्या विचारदनुपतिं साधुरिच हरिओम तस्य जय जय श्रीमद् भगवते वाक्यणे पारम समेतान्ते तेजस्कन्धे तृतीय हरे नमः गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुतौ वाच वयसकरिति पचस्ततो निश्चयमात्मनो उपदाय मतं गणे अवतरिक सत्यं वेद आत्मदा सुतगार पशुधर मम मनुष्य राज्य विकलयन्यतं पुरुणं मम तां जव कपरसच्चे ममेवा कमिर्मं प्रेजय सतमः कृष्णान भाव शर्मणे श्रद्धान वा मन संस्थान जे विज्ञान संदेशम पारमत्र बरि दिगम जय वासुदेव भगवते आत्मभाव दृढं कथते आजवत समचिनं बतो ब्रह्म सर्वके सतवान नगर तमे विषयते मय मालिकत है तकथा यणि अति रचता सकाणं दोसौवलेन पायेन मत्र पजुआवधि हो दर्शन सुतमियत बलिने वकुशतस्मिन् प्रतिपम रकितार्थ निर्वासितामासु ब्रह्मस्वसान सहितमतुल गणकाण बाणेन भारतो पुरोपा पटुतागितो स्वयं धनुधारिं दायमायं कथं वेदयातु मानयान शनिर्गत कौरवमुनि लब्धगता वयात्रिदवद पदानि अन्न कर्मात पुण्य चिकित्सेर्मस्वति चितयानि शातमोदि परेषु पुण्य पवना द्विकुञ्जेषु पंगतो येषु सरिसरसु अनन्तलिङ्गै समानं घटेषु तदारत्रिदाय तने सनन्य काम पर्यटन मेद्य विविक्त वृत्ति सदा कृतो तसैनो बलुद अलज्जित स्वैर बलुद विषुप्रतानि चेर हितोषणानि
एतम व्रजन भारतमे वर्षं कालिने यावत् गतवन् प्रवासं तावत् ससास सिद्धिमे गचग्राम्येका तपत्रं भजते न वासं तत्र तव सुष्टा वसुहि विनिष्टं वनं यथा वेणु जबन् निसंश्रयं संस्पर्धया दग्धमता निश्चतन सरस्वतीं प्रतिकियाय तोषिणीं प्रभो तस्यं त्रितास्य संसु मनुष्य पृथु रथाग्निः सिद्धस्य भार्य तीर्थं सुदासस्य भवं कुवस्य श्राद्धदेव सदास्य अन्यानि चेत् देवदेव कृतानि नाना इतराणि विनो पर्दङ्ग मुख्यं गीतं धिराणि यथा स्नात्पेण मनुस्मरति तत्र तथा स्तुतिव्रजसुराटं सौवीरमसन् कुर्याङ्गलास्य कालेन तावदेमुना मुखेत ततो धव भागवतं ददर्श सवासि देवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पति प्राक्तायं प्रतितमालिं विगाढं प्रणयेन भद्रं स्वनाम प्रसिद्धं पुराणं कोटिः पुराणं पुरुषं नाद्यपात्मानं कृत्य केला भद्रणौ आसाद कुशलं विधायक दर्शनं कुशलं सुजगे क्वचित् पूर्णं परमश्वरेण भाम सहस्र सुखमंग चौरी दुरापं क्वचित् बुधस्वस्थनानि भास्ते सुभक्तपुत्र भगवत् प्रपन्नय कर्णपादाङ्कितमार्गपांश शोचे सदा प्रेम विभिन्नदैर्य क्वचित् शिवं ते भगवोधपुत्र विष्णु प्रजाया इव देवं मातु योगै सुगार्पण ददादेवं त्रये यदा ये गवितानमर्थमपि शिलापि भगवान् सुखं भूयसा ततं कामदो निरुद्ध इमामनं विष्णु शब्दैवनि मनु महिं सततु यततमपि शितन्ये जनिदा नोदैवं अनन्यकृत समनु वर्ताये हृदि सत्यात्मदस्य रुदेश पदादय सतिवनं विषमोऽपि चतुर्वं विजयाच्युताभं धर्मेण धर्मं परिपाति च दुर्योधनोत्तप्य तत्सवायं सम्राधिलज्जं विजयानुवृत्त्या हरि किम्मा कृतागो सुगमत्यमर्षि भीमो हिवत्तिर्गतमं व्यमुञ्चते सन्धिपात्मरणभूर्णशेः मार्गं गदाय सर्वविदित्रम् कथित यशोदारथयुतपानं गाण्डीवदण्डो परतारि राष्ट्रलक्षितोय सरकुटकुटो मया गिरातो गिरिशस्तुतो संयमा भूतस्य तनय विदितासात्रभृतस्वसात्रे प्रियं प्रभुर्गामीव प्रियाय विधिसुराजतुतरमेरते वज्रया द्रवतं सकटोक्षुलं भट्टोदितपौरुषं पामो मात्रमुपादाय प्रतिसंकृतविक्रमः कालेन न कदाचित् आगतु निजनादे तमेवान्यतिरीयन्ति लोकाभूरदयत्रय निश्चयं मनुवृतायं निर्मुक्तसचिवाचरं त्रिविगन्धयमानं सङ्ख्यासङ्कटनाय यातु सदा परमेत्यं विदुतसेवचान्ति कल्पो घोरियं पात्मम् अभिचक्षते हरिनाभिसरस आसीत् लोकसर्वम् आयन्तु कथितकल्पो दिव्यतमिवारद्वारा दिविघातये दर्शन् परवहरि कालयन्त विरागात् निमेष उपचार्यते अभ्यगतस्य अनन्तश अनादिजगदात्मन कालयं परमन्यदिविरागान्तो ईश्वरमेव हितं प्रभुर्भुवने ईश्वरो धाममानिनां विगारे समितयो त्रिविशेषादिर्विरधृत अन्नकोशकयं मतस्फटिमिश्रितस्तु पराधिकैर्यसुपरिविते ब्रह्माण्डवद्वचिते जगदाचार्य कोटिषु अजराशयं पदावचनं ब्रह्म सर्वकारणकारणं विष्णु धाम परम साक्षात् पुरुषस्य महात्मा हरि ओम तत्सत् जय जय श्री गुरुवायूरप्पा कालकमिताकृत्य संधि एकादश हरये नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवाय इति बणिकस्य कालकपरमात्मन महिमा वेदगर्भत यतस्राच निबोधमे शस्त्रजागृततामि श्रमोततां श्रमाते मामोब्जमों तमस्सज्ञानवृदयं दीर्घभावेशं श्रीनाथन भवं मन्यत भगवत् ध्यानपूतेन मनस्यानां ततो प्रदासित भद्रगा तन्मेषान् वचनर्मण भासिते भवरायणः शोभध्यात सुतैर्यं प्रत्यख्यातान् शासने कर्तं दुर्विशां जातं नियन्त भुवचक्रव धिया गुरुवेदात दानि जगद्गुरे सर्वजपन भगवान् परिपालन अभ्यदल भद्रया पात्रम् आरोपित करोमिते करोति सुरक्षसुद्वेग योबालक तत्त्वस्त्वामविदास्यादि नाम नारुदयति प्रजाः हृदिन्द्रियाणि सुरभेव वायुरग्नि जलमयि सूर्यचन्द्र तपस्या स्थाननिर्विकृतानि मे मन्युर्मनुमयि न समासुरकदुज गुरुवेदा भवकाल मामदविकृतवतद्देवेति भूषणोमाचं नियोत्सर्वेलाम्बिकैरापति सुरादिज प्रजाः रुद्राणां विश्रितानां सम्मतकसतां जगन्निशां मे साङ्गजयुतं प्रजापतिरसङ्गतः अलम प्रजापति शिक्षादि शिविशुद्धं माया सदात् देवी दिशस्मिरल बणे तपासित भद्रप्य सर्वभूत सुखावं तपस वेदात्मन सट्टा विसमितं भवान् तपसर्व परम ज्योति भगवन्तं मदचं सर्वभूत गुहा भाषं मन्द सविनते भुवमित्रो वाचा राधा कृष्ण
चाहे जपमा बसेको होस्, चाहे भगवानको तपस्या गरेर रहेको होस्, जुन मार्गमा लागेको भए पनि यदि विवेक रूपी बुद्धि जोसँग छैन, विवेक रूपी बुद्धि मलिन भएको छ भने मनले अधोगतिमा लैजानको लागि अत्यन्त प्रयास गर्दछ। हजुरहरू यहाँ बस्नु भएको छ, त्यो मनलाई बाहिर जान नदिनु होला। हजुरहरूले विवेक रूपी बुद्धि प्रयोग गरेर सबैको जान्छ भाइ, कोही कसैको पनि त्यो बाहिर जानबाट रोक्न प्रयास नै चाहिन्छ। त्यसो भएर हामी यहाँ बसेका छौँ, चाहे हाम्रो घरमा, चाहे हाम्रो परिवारको सन्निकटमा, चाहे हामी कथाको सारलाई दुध धेरै हुन्छ, जमाउँदा दही थोरै हुन्छ, त्यो पनि अझ मत्थाखेरि नहुने कति हुन्छ, थोरै हुन्छ। कथाको सार नहुने स्वरूप हामीले प्राप्त गर्नेछौँ आज समुद्घाटनको दिन। हामी यहाँ अरू कुनै कार्यक्रम नराखिकन सिधै यहाँ भागवतको मङ्गलाचरण जन्मादेशीबाट सुरु गरेर प्रवचनको माध्यमबाट यसको उद्घाटन हुनेछ। यो उद्घाटन गर्नुभन्दा पहिला यज्ञमा कुनै प्रकारको विघ्न बाधा नआओस्। हाम्रो यो 7औं दिनसम्म अविच्छिन्न रूपमा रहने यो कथा प्रवचनमा, पाठ पारायणमा, यो सप्ताह यज्ञमा कुनै प्रकारको विघ्न बाधा चाहे यज्ञमा नआओस्, हाम्रो शरीरमा नआओस्, हाम्रो मनमा पनि नआओस्। त्यो विघ्नलाई निवारण गर्नका निमित्त केवल 3 मन्त्रले यहाँ स्वस्ति वाचन गरेर उद्घाटन हुनेछ र त्यसपछि हामी गुरुजीका मुखबाट यो कथालाई अगाडि बढाउनेछौँ। उहाँका मुखारविन्दबाट छुटेका प्रवचनहरू सुन्नेछौँ। स्वस्ति वाचनको रूपमा वैदिक मङ्गलाचरण गरिदिनु हुनको निमित्त यस यज्ञका रुद्राभिषेकाचार्य विद्युत पर्वर रमेश नेउपानेजीलाई म वैदिक मङ्गलाचरण गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। हरिओम। हरिः ओम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसरावाः स्वसति नः पूषा विश्ववेदाः स्वसति न सतार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वसति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनु निर्व्यशेमाहि देवाहितं जदायुः द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगु शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शाम शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्द भगवानको जो बाहिर छरिएर रहनु भएको छ, परबाट उताको रमाइलो पनि देख्न पाइने, यता पनि सुन्न पाइने यो फराकिलो आवाज भएको नोद्वेगोश्चितिभस्मनाम च सुखं गौरी
स्तनालिङ्गना दात्मा रामतया हिताहितसमा स्वस्थो हरो पातु वः नेपाल जननीं वन्दे वन्देऽहं राष्ट्रगौरवं गण्डकी नन्दनं नित्यं वन्देऽहं कौशिकीं तथा अमन्दानन्दसन्दोह दानकर्मणिदीक्षितः स्वामिनः परमानन्द चन्दनानन्दयन्तु नः सच्चिदानन्दरूपाय हरे नन्दलाल जय जय गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नन्दलाल जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नन्दलाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नन्दलाल जय जय गोविंद गोपाल मुरली मनोहर जय जय पशुपति जय भोलेनाथ जय जय पशुपति जय भोलेनाथ जय जय पशुपति जय भोलेनाथ जय पशुपति जय भोलेनाथ जय जय बागमती जय शिवधाम जय जय बागमती जय शिवधाम जय जय बागमती जय शिवधाम जय शिवधाम जय जय बागमती जय शिवधाम जय जय गोविंद गोपाल हरे नन्दलाल जय जय गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नन्दलाल जय जय गोविंद गोपाल मुरली मनोहर नन्दलाल जय जय गोविंद गोपाल मुरली मनोहर जय जय दामोदर जय मुक्तिनाथ जय जय दामोदर जय मुक्तिनाथ जय जय हरिहर देवघाट धाम 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 जय जय हरि गोपाल मुरली मनोहर व्याख्या पनि सुनेका छौं। त्यसैले धेरै विस्तार नगरिकन मैले के जानकारी मात्र गराए भने कि यस प्रकारको जो सत्संग हुन्छ, सत्संग प्राप्ति हुन्छ, एउटा कर्म हुन्छ, कर्मकाण्ड गर्ने विषय, कर्म गर्ने विषय हुन्छ। हामीले एकाको रूपमा पनि अनुष्ठान सम्पन्न गर्न सक्छौं। तर साप्ताहिक रूपमा भने
केवल कर्मलाई मात्र पूर्णता प्रदान गर्ने नभइकन सँगसँगै सत्सङ्ग पनि यहाँनिर जोडिन्छ। तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्ग। विष्णु पुराणले बडा दिव्यताका साथमा वर्णन गरेको छ। सँगै हजुर हामीले पूर्ण गर्नेछौँ। त्यसैले यो दिव्य अनुष्ठान जहाँ सबैको आगमन सबैको उपस्थितिका साथमा यो अनुष्ठान सत्र प्रारम्भ भएको छ, त्यसैले पनि हामीले भन्ने पनि गर्छौँ, बसन् सधैँ हरि बसन् सधैँ हरि भक्तजनका वरिपरि बसन् सधैँ हरि बसन् सधैँ हरि बसन् सधैँ हरि भक्तजनका वरिपरि बसन् सधैँ हरि बसन् सधैँ हरि बसन् सधैँ हरि भक्तजनका वरिपरि बसन् सधैँ हरि। बोलो भागवत भगवान को। सारा विश्व ब्रह्माण्ड समाप्त भएर जान्छ, तर त्यो सत्य तत्त्व कहिले पनि नाश हुँदैन। हो त्यो अविनाशी तत्त्व सत्य शब्दलाई, सत्य तत्त्वलाई, त्यो चैतन्यलाई, परम चैतन्यलाई हजुर हामी सबैले ध्यान गर्नेछौँ। वास्तवमा महर्षि वेदव्यासजीले प्रारम्भ गर्नुभयो ध्यान गरौँ भनेर, किनकि हजुर हाम्रो जीवनको प्रारम्भ पनि वास्तवमा ध्यानबाट नै भएको हुन्छ। मैले बारम्बार बेला मौकामा भन्ने गरेको छु, जति बेला हजुर हामी आमाको गर्भमा थियौँ त्यति बेला पनि हामीलाई दिव्य दृष्टि प्राप्त भयो। भगवानसँग हामीले पुकारा गरेका थियौँ, ध्यान गरेका थियौँ, यो भगवान मलाई यो मलमूत्रको कुण्डमा नफसाइबक्सोस्, मलाई यो संसारमा नपठाइबक्सोस् भनेर हजुर हामी सबैले भगवानको प्रार्थना गरेका थियौँ आमाको गर्भमा रहेको बेलामा। किनकि मानवले दुई पटक त्यो दिव्य दृष्टि प्राप्त गरेछ भनेर शास्त्रले वर्णन गर्छ। एउटा त शरीरबाट देह त्याग हुने बेलामा, प्राणान्त हुने बेलामा, एउटा आमाको गर्भमा रहेको बेलामा दिव्य दृष्टि प्राप्त गरेछ। म हिजो को थिएँ र आज कहाँ छु र भोलि कहाँ जाँदैछु, यो दिव्य ज्ञान हजुर हामीले जीवनमा दुई पटक प्राप्त गरेछौँ। एउटा त आमाको गर्भमा रहेको बेलामा, एउटा यो संसार छोडेर देह त्याग गर्ने बेलामा, प्राण जाने बेलामा। त्यति बेला पनि त्यो दिव्य दृष्टि हजुर हामीले प्राप्त गरेछौँ। सारा आमाको गर्भदेखि पैदा भएको दिनदेखि लिएर त्यो अन्तिम दिनसम्म हजुर हामीले गरे हाम्रो शरीरबाट भएका सम्पूर्ण कर्महरूको स्मरण हुन्छ अरे जीवात्मालाई। अन्तिम समयमा सबै देख्छ आफ्नो आँखाको अगाडि। जुन कर्म उसको मानस पटलमा एउटा चाहिँ एउटा बिम्बको रूपमा, प्रतिबिम्बको रूपमा स्थापित बन्छ।
जुन कर्म जीवनभरिका कर्महरू मध्येमा जुन कर्ममा उसको माया ममता मोह विशेष गरेर जोडिन्छ। प्रारम्भ गर्दा नै के भन्नुभयो त भन्दा हामीहरूले पनि जबसम्म ध्यान गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो मानव जीवन सार्थक बन्दैन। कहीँ गएर पलेटी मारेर गङ्गा किनारमा गएर माला जपेर समातेर बस्नु त्यसलाई पनि ध्यान बनियो, तर त्यो मात्र ध्यान होइन। पाणिनीले संस्कृत व्याकरणले ध्यान शब्दको अर्थ वास्तवमा ध्येय चिन्तायम भन्ने धातुबाट बनाए। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश हजुर हामीले बाहिर देख्न सक्छौँ, कसैलाई अनुभव गर्न सक्छौँ वायु आदिलाई। जे होस् जसरी भए पनि हामीले बाहिर पृथ्वी जल तेज वायुलाई देख्छौँ। त्यो पाँचवटै तत्त्व चाहिँ हजुर हाम्रो शरीरमा बसेको छ। त्यसैले जसरी यो शरीरमा सबै पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सबै स्वरूप परमात्मा विद्यमान छ, व्यापक छ, विद्यमान छ, निहित छ। त्यसैले यहाँ यही सत्य शब्दको विशेषण दिँदै भन्नुभयो महर्षि वेदव्यासजीले अन्नयात् इतरतः अर्थेषु भनेर। अर्थेषु भनेको समस्त पद पदार्थहरूमा, अन्नयात् भनेको अनुस्यूत छ, सबै ठाउँमा व्याप्त छ। पदार्थमा भिन्नता होला तर परमात्मा सबै ठाउँमा विद्यमान छ। तर सबै ठाउँमा रहँदै पनि इतरतः छ, फेरि अलग्गै छ। उसँग चाहिँ आसक्ति भएर जोडेर चिप्केर भएर त्यो पानी रहँदैन। त्यस्तै गरेर यहाँ पनि बताउनुभयो त्यो सत्य स्वरूप परमात्मा के छ त भन्दा सबै ठाउँमा सर्वत्र व्याप्त छ, सबै ठाउँमा विद्यमान छ, नभएको ठाउँ कहीँ पनि छैन। तर पनि अनासक्त भएर कर्कलाको पातमाथिमा बसेको जुन कर्कलाको पातमा राखिएको पानी जसरी अनासक्त भएर यत्र तत्र घुमिरहन्छ, त्यस्तै गरेर परमात्मा पनि सबै ठाउँमा व्याप्त रहेर पनि अनासक्त छ, कहीँ पनि आसक्ति भएर बसेको छैन। त्यसैले यहाँ बताइयो इतरतः, त्यही हो इन्द्रियहरूलाई आफ्ना आफ्ना कार्यमा प्रवृत्त बनाउनको निमित्त चाहिने तत्त भिन्न भिन्न शक्ति प्रदान गरेको छ। यदि त्यो शक्ति त्यो चैतन्य परम चैतन्य हाम्रो हृदय आकाशमा नहुँदा बित्तिकै हजुर हाम्रा छोराहरूले भन्छन् राम नाम सत्य हो भन्दै दुई आँखाबाट अश्रुपात गर्दै हाम्रो अन्तिम संस्कार गर्न बाध्य हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यही परमात्मा तत्त्वको वर्णन बनाएर यी मङ्गलाचरणका श्लोकहरू पङ्क्तिबद्ध भएर बसेका छन्। त्यसैले ती 18,000 यिनै तीनवटा श्लोकको व्याख्या अगाडि गएर ती 18,000 श्लोकले गर्ने हुन्। विभिन्न कथाको माध्यमबाट कुनै लीलाको माध्यमबाट अगाडि गएर वर्णन गरिन्छन्। तर मङ्गलाचरणमा भने एउटा बिल्कुल अद्वैत फरक रहेर एउटा सत्यको चाहिँ निरूपण गर्दै वर्णन गरेको छ भागवतको मङ्गलाचरणले। त्यसैले पूर्ण वेदान्तको व्याख्या हजुर हामीलाई यो सुन्न बुझ्नको लागि जटिल हुन सक्छ। भागवत भगवान हरे कृष्ण तिम्रो
सबैले हात बोलो भागवत भगवान को ती सबै कर्महरू वास्तवमा जो दिएको हुन्छ त्यो वस्तु प्राप्त गर्ने यो यस प्रकारको उदार भावना मनमा उत्पन्न हुनु भनेको निर्मत्सर बन्नु हो। अर्काको उत्कर्षलाई सहन सक्नु, अर्काको उत्कर्षलाई देखेर भगवानसँग पुकार गर्न सक्ने, भगवान फलानाको त यत्रो महल रहेछ, सबैलाई यस्तै महल बनाइदिनुहोस्, फलानाका सन्तति बडा दिव्य रहेछन्, सबैको सन्ततिमा त्यही सद्बुद्धि प्रदान। अर्काको प्रगतिलाई देखेर दुखी हुने अभ्यास मानवमा रहिरहन्छ, तबसम्म यो भागवती ज्ञान उसको जीवनमा उत्रिनेवाला छैनन्। त्यसैले यहाँ भन्नुभयो श्रीमद् भागवत महात्रयबाट विमुक्ति प्रदान गर्दै परमात्माको स्वरूपको बोध गराउने वास्तवमा श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रतिपाद्य विषय बन्यो अहिलेसम्मको व्याख्याले। त्यसैले यहाँ भनियो शिवदम तापत्रयमूलनम, श्रीमद् के छैन र किम्बा परै के छैन र, अर्थात् सबै चिज छ। यहाँ त भन्नुहुन्छ व्यासद्वारा रचना गरेको भागवतलाई त यदि कसैले शुश्रूषुभि तत्क्षणा श्रोतुम् इच्छति, सुन्ने मात्र इच्छा गर्यो भने पनि सद्यो हृदय ईश्वर अवरुद्धते। भागवत भगवान भगवान पनि प्रसन्न हुनुभएको छ, अनुष्ठानमा आज वृष्टि गर्नुभएको छ।
शिव्यते विविष्टसहात एकं वर्तते तमः ॐ आराध्यै नमः ॐ ज्वालामालिन्यै नमः ईश हरे प्रभु जय जगदीश हरे प्रभु का चरण उपासक हरि का चरण उपासक कति कति पार करे ओम जय जगदीश भावत जगदीश निर्मल कारण अविनाशी प्रभु कारण अविनाशी शरणागत प्रतिपालक शरणागत प्रतिपालक चिन्मय सुख राशि ओम जय जगदीश हरे स्थिति लय करता त्रिभुवन का स्वामी प्रभु त्रिभुवन का स्वामी भक्ति सुधा बरसाओ प्रेम सुधा बरसाओ शरण भयो हामी ओम जय जगदीश हरे आसुर भाव निवार प्रभु तारक सुखदाता अनुरूप
केन नीराजयाम्यहम्। एकचोटि आरती लिएरै हजुरले एकजनाले आरती लिनु होला, अरूले सबैले हात जोडेर यो विश्व ब्रह्माण्ड परिक्रमा गरेको भगवानलाई बिचमा राखेर घुमेको अनुभव गर्दै एकचोटि आफ्नै ठाउँमा घुम्नु होला। ओम मा सपता शासन परिदायस्ते सपता समिता प्रेताः देवा जड्डनन् तान्वाना अपदनान् पुरुकां पशोमा। ततः पुष्पाञ्जलिम मनरूपी फुल अवश्य लिनु होला, बाहिर फुल मिल्ला नमिल्ला भाइ लिनु होला। ओम मा जगने न जगनामाय जन्तदेव स्थानि धर्माणि प्रथम न्यासान् देहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै शर्मणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम मा विश्वत चक्षुरुत विश्वत मुख विश्वत बाहुरुत विश्वत सपात साम्बाहुभ्याण्डमति सम्पतत्रैर्दाव नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामः। बोल सच्चिदानंद भगवान को, आनंदकंद भगवान को, लक्ष्मी नारायण भगवान को, उमा महेश्वर भगवान को, सियावर रामचंद्र भगवान को, राधावर श्री कृष्णचंद्र भगवान को, श्रीमद्भागवत महापुराण को, सप्ताह महायज्ञ को, यज्ञ पुरुष भगवान को, समस्त देवी देवताहरू को, स्वर्गीय पितृगणहरू को, प्राणी मात्र को, वेदोक्त सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। ओम जय जय श्री आदौ चतुष्पादतलैकते छेदौ नाभिदेशे मुखमण्डलैक्यं सर्वाङ्गदेशे शुद्धशब्दवारात्रिकं भक्तजनः प्रकुर्यात्। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्रायिमां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भवः। ओम तनोपा अग्नेशितानो मे पायायुधा अग्नेशायुरमे देहि प्रचोदा अग्नेशि प्रचो मे देहि अग्ने जैन मे तान्वा ऊनन्तन्म आवृण इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सस्ताय आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्यभय शनि अग्निः प्रसेम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश शरदः शतात्तः। आरती दर्शनं पुण्यं पवित्रं पावनाशनम् आपदा हरते नित्य लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम मा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेतानि ददे पदं समूढं सपाकं सुरेश्वा नमः संभवाय च मयो